Okay. You guys have been asking about the Hive project and HQL. So today we are going to work on that in detail. But before that, if anyone have any question on Java, Maven, Gradle, अगर किसी ने Gradle पढ़ा हो, okay, or on Eclipse, JRE, JVM, JDK, anything, we can talk about that in the first 15 to 20 minutes. Anyone, guys, any question, doubt, concern on Java? And that too, we looked in J2SE, right? We didn't talked about J2EE because in J2EE, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, इंटरनेट एप्लीकेशंस बनानी होती हैं जिनमें हम APIs बनाते हैं. And I explained you in detail कि how J2SE and J2EE projects work, what are the role of different kinds of APIs available in the market. So far, guys, any question? Even on the jar creation, how to create jar and all? Guys, am I audible? My screen is visible. Okay, so what I'm asking is any question in general. Okay. तो कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि जावा के प्रोजेक्ट को बंडल कैसे किया जाता है जार्स में, राइट? सो जार फाइल्स कितनी तरह की होती है, कोई मुझे बता सकता है? Guys, what are the different types of jar files? Guys, do you know, yes or no, like jar files कौन कौन सी बनाई थी हमने कल? Gulzar, so far I'm just discussing yesterday's topic only. अभी हमने कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है. So guys, yesterday we created two jar files. One was simple jar file and one was runnable jar file. Runnable jar file you can double click and run. But simple jar file you need to run via certain commands. Okay. और jar files में भी further
देयर इज एन ऑप्शन कि क्या आप अपनी कोड भी उसके साथ बंडल करना चाहते हो, मतलब डॉट जावा फाइल्स, या नहीं करना चाहते फॉर सिक्योरिटी रीजंस, राइट? वी सॉ दैट. ओके, जार फाइल्स आप एक्सपोर्ट करके किसी को भी दे सकते हो. एज आई टोल्ड यू yesterday, you can export a jar file. Just right click the project, जो भी आपने जावा का प्रोजेक्ट बनाया है उसे राइट क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो in the form of a archive file, which is jar, java archive. Okay, so there is this option of export. Okay, then we talked about the maven projects. Can anyone tell me the most important file in a maven project? What is the name of that file? गाइस, maven प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी होती है? Yes, Nishtha, correct. pom.xml, it's pom.xml file. Yes, Gomini, it's pom.xml file. अगर ये फाइल करप्ट हो गई, that means कि आपका maven project will not work. Okay, then we talked about the maven build and running the project, running via certain configurations here, right? Our maven build was successful, but still we were not getting the output. There was certain error, which was, can anyone tell me what was that error or exception? हमारा maven build successful हो गया था, but when we were running a java file, we were getting an error. What was that error? Anyone? आप में से कुछ लोगों का वो चल गया था, कुछ लोगों के केस में एरर आ रहा था. So that was class not found exception. Okay, class not found exception, जहां पर आपकी मेन क्लास नहीं मिल रही, तो by doing certain configuration changes that can also be resolved. Okay, I told you that in Java there are two things. One is error, another is exceptions. Okay, exceptions, I told you one exception earlier, which was like when you try to do this 1 divided by 0, you will get one exception. Can anyone tell me what was that exception, if you remember? If you are trying to do this kind of mathematical operation, say integer a is equal to 1 divided by 0 semicolon. देखो, जावा में जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो उसके बाद सेमीकोलन जरूरी होता है. जावा में किसी भी स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन मैंडेटरी है. पाइथन में ऐसा नहीं होता. ओके, क्योंकि पाइथन इंडेंटेड लैंग्वेज होती है, इसलिए वहां पर इसकी जरूरत नहीं है. बट जावा इंडेंटेड लैंग्वेज नहीं है, इसलिए सेमीकोलन से हर स्टेटमेंट को एंड करना पड़ता है. ओके, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका ये है. कमेंटिंग करनी है तो 2 फॉरवर्ड स्लैशेस. पाइथन में आप कैसे कमेंट करते हो? यूजिंग विच सिंबल? कैन एनीवन टेल मी? Perfect, Aditi. Thank you. It's the hash symbol. Okay. So we know that Python is a indented language. Java is a non-indented language. It's a non-indented language. Okay, Gulzar. It's indentation, not intent. Indentation. Okay. Okay. Yeah, it's indent.
Python is an indented language. Java is a non-indented language. And this kind of mathematical operation will give you which error or exception? Arithmetic exception. Okay? Arithmetic exception, or you can say the error. Let me show you one thing important. So Java में जब भी हम कहते हैं error, that is a different thing, and जब भी हम कहते हैं exception, that is a different thing. Okay? Mainly जो programmatical errors होती हैं उनको हम exceptions कहते हैं, और exceptions का पूरा एक tree है. तो Java में 90% of the things are exceptions. Okay, the errors are known as exceptions. And as I told you, class not found exception, arithmetic exception. So if you look at Java exception, so just look at it. What is an exception in Java? Exception is an abnormal condition. In Java, an exception is an event that disrupts the normal flow of the program. Okay? Just remember, Java में हम exceptions की बात करते हैं, which are nothing but the events that disrupts the normal flow of the program. And an exception is like an object. Okay? Every class has an object, right? So an exception is also an object which is thrown at the runtime. So most of the exceptions you get only while running the program, not while compiling the program. I told you there are two things, right? Java is a compiler language. So if there is any syntactical error, it will be given to you during compile time. Okay. But if there are some logical errors, they will be thrown at the runtime. For example, int a is equal to 1 divided by 0. This is not a compiler error. For compiler, you are just dividing two numbers. So this is not a compile time error. But when you run this program, at that time you will get this error. So that will be a runtime exception. Okay. So you should know the difference. When I'm running this program, okay, इन सारे प्रोग्राम्स में कुछ ना कुछ चेंज हो चुका है, इसलिए let me create a new project. So I'm creating a new project. Inside that new project, I am creating a class. And in that class, I'm creating a public static void main method.
with string array of arguments. So what I'm saying, if you look at this program, there is no error in this program. Why? Because this is not a compiler error. So when I run this program, it should run. Okay. But now when I'm running it, while running it will give me arithmetic exception. Okay. So that means during runtime I'm getting the error, not during compile time. But let's say I'm saying integer. So this is the compile time error, where this symbol is saying there is some error, that this integer, they don't know what this integer is, because int use करके ही हम integer declare करते हैं. Okay. So while you are doing the programming, the editor will tell you the compile time errors because it keeps compiling the program. Okay. Integer cannot be resolved to a type. जैसे इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर नाम का जो डेटा टाइप है वो कोई है ही नहीं सिस्टम में, तो इसलिए एरर आ गई, तो वो कहता है भाई इसको इंट करो. ओके. क्या गुलजार, टेल मी. सर एक बार वो क्वेरी फिर से डिस्प्ले करना, एक बार 1/0 वाली. एक मिनट. हाँ बताओ. सर कि इसमें 1/0 हमने इंट लिखा हुआ है, पर इंट तो इंटीजर का ही शॉर्ट फॉर्म है ना, और ये नंबर तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है हमने. और दूसरा तो वो कौन सा एरर होगा? फ्रैक्शन में कहाँ लिखा है हमने तो मतलब एक डिवीजन ऑपरेशन किया है ना. उस यस डिवीजन सर. ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको इस इंटीजर में असाइन हो जाएगा. I got your point. Let's say this thing. Let's say you are doing 1 divided by 2. Okay. ओके सर. I'm telling you. 1 second. अब जैसे 1 divided by 2 is a allowed operation. It's a correct operation. Okay. But because it's integer, तो इसकी वैल्यू तो 0.5 होगी, तो इसके अंदर क्या 0.5 स्टोर हो जाएगा? Let's see. You are seeing this 0. What happens is when you do this operation, it returns a floating number. But out of that floating number, जो भी डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है वो आपके इंटीजर को असाइन हो जाएगी. So instead of 0.5 Gulzar, you are getting 0. But if you want to resolve this, you can make it float. So you can make it a floating number. If you make it a floating number, Gulzar, you're getting 0.0. 1 second. Let me make it double. 0.0.
So what is happening, Gulzar, right now, if you look at, when it was integer, it was only taking 0, but when I'm making it double or float, it's taking 0.0. Ideally, it should be 0.5. So what I'm trying to do, कि ये 0.5 क्यों नहीं आ रहा, उसके लिए now I am leveraging some mathematical libraries. जैसे आप पाइथन में क्या करते हो गुलजार, पाइथन में आप करते हो like you import the packages, right? Like pandas, you import pandas as pd, numpy as np. In Java also we import the packages, like import java.math.star. इसका मतलब क्या हुआ कि जो जावा में मैथमेटिक्स का पैकेज है, मतलब मैथमेटिक्स का पैकेज मतलब इसमें सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. अब इसमें यहाँ स्टार लगाने का मतलब है सारे मैथमेटिकल फंक्शंस, फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, लॉग, सब मेरे पास यहाँ पर अब यूज किए जा सकते हैं. तो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम going to use floor and ceiling functions and see if that resolves the problem. There is one thing, for example, if you type something like fl and you don't know the full name of this function, you do control and shift, control shift. As soon as you do control shift, it will show you a drop down or list of all the possible functions which starts with fl. If you look at, see, this is how I am getting the drop down. So guys, what you need to do, please try it out. Just type in some function name, for example fl, and control shift, and you will see such drop down with all the available functions. So that's the benefit of using an IDE. आपको सारे functions को याद रखने की जरूरत नहीं है. Okay, and also import, you can import this java.mat.star. So abhi I'm pinging you this function, try to run it. Just try to run it. So few things to remember here is, you are creating a class having a main function. Okay, then within that you are trying to divide some numbers and you are going to assign it to an integer. If you assign it to an integer, you will get only the integer value. But if you want the correct value or the absolute value, you need to use float or a double. Okay, float or a double, and then you can print that output. Guys, please do this and let me know if it's working. And also what you are doing, you are importing certain packages. So Java में भी हम packages import करते हैं, the additional packages that we need, like import Java, सारे mostly packages का नाम ऐसे start होता है java dot. Now if you see, there are so many packages, guys. Java dot applet awt. Okay, there is this mathematical package if you have to do advanced mathematical operations. There is this NIO. NIO is like new input output. It's a new input output package. Input output मतलब जब आपको कोई files को read या write करना हो, तो you need input output packages. You have security related packages. You have SQL packages. You have time related functions. Like Java के time functions हैं आपके पास. Okay, all those things are available.
Like, so if you look on my screen right now, I'm writing a program and then I'm importing some packages. Java is a super package, math is a sub package. Java is a super package, time is a sub package. Okay. Now let's say you want to print the current time. Like, what is the current time? So you need this package, and this package will provide you the functions to know the current time. So remove the star and say control shift. Say it's giving me all the possible functions, month, day. So there are lot of functions available, even sub packages available, using which you can print the time and the date. Okay. जहां जहां C लिखा है वो क्लासेस हैं. If you look at C, they are the classes. E are certain exceptions for you, or if you, okay, leave it. So Java dot time dot star. Let me show you how to print time. Guys, please let me know if you are following this. Please try it out. Import these packages and tell me if you are getting any errors. Okay. So what I am saying is you are writing a program. Using that program, you can do mathematical operations. You can assign those values to double, integer, and float to get the output. But you are getting 0.0. If you want 0.5, we need to use floor ceiling functions, or we may need to use some advanced functions. For that, we first need this mathematical package. Okay. Similarly, if you want to do some datetime operations, you need this datetime package. Okay. Gulzar, this double is not a function. Okay. This is a data type. Double is not a function. It's a data type. Okay. Double data types are the ones which can handle decimal values. It's like decimal values. Okay.
Nishtha, what is the error that you are getting? Yeah, I'm looking into that, Nishtha. So, guys, what I'm trying to do is I'm using Java's time package, and using that Java's time package, I can print the current date of the system. The current date, the current time, if you look at using this class, so java.time is a package and local date is a class जो मुझे लोकल डेट देती है. लोकल डेट मतलब उस मशीन की लोकल डेट. अगर मैं इंडिया में हूं तो आईएसटी टाइम जोन में, मैं अमेरिका में हूं तो अमेरिकन टाइम जोन में. दैट इज व्हाट इट गिव्स मी, a date without a time zone calendar system such as like whatever is the date, like 2007 12 3. So this class does not store or this, so it is an equivalent to permanent this Gregorian calendar. Yeah, so this is the class using which I can print the date. Okay, so now what I am doing is, कभी भी आपको एक्सटर्नल पैकेज अगर यूज करेंगे, आप उसकी क्लास को इंपोर्ट कर लो, फिर उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पे, एक लोकल डेट, उसका एक वेरिएबल एंड न्यू लोकल डेट डॉट नाउ. इसका मतलब कि ये क्लास है, क्लास का ये ऑब्जेक्ट है जो हमने पिछली बार भी देखा था, न्यू, और ये लोकल डेट. दिस इज द लोकल डेट विच इज द क्लास. एंड नाउ इज अ फंक्शन. किसी भी क्लास के अंदर कोई एक फंक्शन है नाउ. नाउ मतलब अभी इस समय करंटली क्या टाइम है. I think there is some change in this package, so there are other package also available. Int. Okay. Okay. देखो guys, what's happening is when I'm creating this particular object, it's asking me to put in some variables for that function. Okay, but when you put the variables, still it's going to throw me the error. The constructor, now this word constructor is very important, I'll tell you. The constructor local date int is not visible. अब प्रॉब्लम ये है कि जिसने भी ये पैकेज बनाया और उस पैकेज में ये क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर उसने क्या लॉजिक लिखा वो मुझे नहीं पता. तो अगर मुझे वो लॉजिक देखना है कि उसने आखिर ये लोकल डेट फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक लिखा है जिससे कि मैं इसको करेक्ट कर सकूं, तो आपको क्या करना होता है, कंट्रोल प्रेस करो. कंट्रोल प्रेस करने के बाद ये देख रहे हो ये क्लिकेबल हो जाता है बटन. जब भी आप किसी और की क्लास को यूज करते हो तो कंट्रोल प्रेस करते ही ये क्लिकेबल हो जाता है. तो आप इसको क्लिक करके उसके अंदर उसने जो भी कोड लिखी है वो देख सकते हो. तो लेट मी क्लिक इट. अब मैंने जब क्लिक करके इसको ओपन करा तो ये उसकी कोड खुल गई. बट इफ यू लुक एट, डॉट क्लास फाइल दिख रही है यहाँ पे, डॉट जावा फाइल नहीं है जो मैंने कल आपको बताया था.
कि ये जो जार फाइल मैं यूज कर रहा हूं किसी और की, जिसको मैंने इंपोर्ट किया है डेट टाइम पैकेज को, उसने अपना सिर्फ क्लास फाइल शेयर किया मेरे साथ, जावा फाइल शेयर ही नहीं किया। तो मुझे एक्चुअल में उसने क्या कोड इंप्लीमेंट किया पता नहीं लग सकता, बट फिर भी यहाँ थोड़ी बहुत जानकारी मुझे दिख रही है, कुछ बेसिक लेवल की इन्फो मुझे दिख रही है। तो हम इस बेसिक लेवल की इन्फो से अगर कुछ जानकारी निकाल सकते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। But you still don't have the actual programming logic that this guy is implementing. But see, he's saying java.time.local date get day of the year. So that means this is one of the function. Let me use this. Get day of the year. So instead of using now, I'm using get day of the year. And let's see if it works. I don't know why these are not working. Get day of the year. Okay, so I am getting the output. There are multiple ways of working here. So Nishtha, let me just ping you this part of the code. Nishtha, try this one out and I'll tell you what I did. Yeah, guys, please let me know if this works for you. So what I'm doing is, in a Java program, if I want to handle the dates, if I want to work with the dates, so I have this package java.time. This is the package, and in this package there are a lot of classes available, but I'm using local date class. And then from local date class there is a function known as now function, which prints me the local date, today's date. So I'm just printing it. Let me know if it is working. नहीं निष्ठा, आपने ये इंपोर्ट किया है? did this import? Without importing how will, मतलब एक तरह से वही हो गया ना, आपने pandas पैकेज इंपोर्ट नहीं किया और आप pandas.read csv कर रहे हो, तो you cannot do that, right? So guys, what I'm trying to show you is, if you have to handle the dates, there is local date time, if you have to handle the time also. So I'm just printing these. So first I'm only printing the local date, then I'm printing local date along with the time. तो ये local, ये date part हो गया, फिर ये t मतलब time, तो क्या टाइम है, 10 बज के मतलब 10:48 59 सेकेंड, एंड ये उसका मिली सेकेंड्स वाला पार्ट. परफेक्ट गाइज, आर ऑल ऑफ यू एबल टू रन दिस? मैंने दोबारा पिंग कर दिया है प्रोग्राम, प्लीज लेट मी नो.
So this time package is important. This maths package is important. Okay. Gulzar, are you able to run this? Gulzar, are you able to do this? Okay. सो गाइज आई एम रीआइट्रेटिंग जो अभी तक मैंने आपको बताया. देखो, सबसे पहली चीज डिवीजन. इफ यू आर हैविंग लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल you are dividing a number by 0, you will get arithmetic exception. Okay, you will get arithmetic exception. But if you are simply dividing certain numbers, you will get that numerical value. You will get that numerical value as output. For example, I want to print A. Okay, I am running this. So I'll get 0. But the result would have been something different, right? It should have not have been 0. तो उसके लिए मुझे इसको इंटीजर में सिर्फ इंट पार्ट ही होल्ड होता है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, या तो फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स which have decimal values, or double which also have decimal values but bigger decimal values. For example, if float can hold only 5 decimal places, double can hold up to 10 to 12 decimal places. That's the difference between the float and double. But int will have only 0 or like 1 or 2 or 3. It's only having integer values. Okay, so now let me run this. Okay, so now even if I do float, why it's not giving me the proper value? Why it's giving me 0.0? Because on the right hand side you have number integers. You have to make them also floating by putting zeros. Okay, let me try to do this. Let me do this. B divided by C, float B is equal to 1.0, float C equals to 2.0. Make it double. Okay, make it double. Okay, make this also double. Okay, so now if you see, we are ignoring float. Okay, leave float, use double. So I'm using double. In double I have values like 1.0, 2.0, and I'm dividing 1.0 by 2.0, so I'm getting 0.5. So now I'm getting the exact value. Okay, so ultimately the point is, on the right hand side, if you are dividing it 1, like 1 divided by 2, they are integers, so you will get integer output. So to solve that problem, you have to make it 1.0, 2.0, so that the output is up till the right decimal places. See, here you have so many decimal places because it's a double number. It's a double, so you have proper decimal places.
more than I think 15 decimal places can be held by double. Okay. So I'm again telling you, if you are having integer a equal to 2 divided by 3, it will only return you the integer part जो decimal से पहले का है, decimal के बाद का return नहीं करेगा. अगर आपको decimal के बाद की values भी चाहिए तो you have to use double or float based operations. Okay, your value should be double. So instead of 2 it should be 2.0, instead of 3 it should be 3.0. Then you get the values up till the right decimal places. इतना पहले ये clear है before I again tell you about the date time. Okay. The second thing that I told you was about dates and times. So there are these packages available, date time packages. You can use these date time packages and you can print now means what is the time now currently in the current time zone wherever you are. So you can print it like this. Okay. Similarly, there is get day of the year, right? उसके लिए मुझे कुछ और चेंज करना पड़ेगा to handle that. What is this? Okay. So guys, I'm again sending you this program. Please try it out. Now there is one thing which is very important here कि आप किसी और का पैकेज यूज कर रहे हो java.time java.math, बट आपकी जो क्लास है, आपकी ये जो क्लास है डेमो क्लास, ये किस पैकेज के अंदर है? वो है डमी पैकेज में. तो कल को अगर आप अपना पैकेज मार्केट में सेल करना चाहो तो आप अपना पैकेज भी सेल कर सकते हो कि भाई मेरा डमी पैकेज है, उसके अंदर बहुत अच्छी कोई फंक्शनैलिटी है, so people can use it. So what they need to do, they will need to write their own program. For example, like this is say their program. What they will do, they will import dummy dot and then आपकी जो भी क्लास फाइल है उसका नाम demo. For example, they will do import dummy dot demo. Dummy dot demo means dummy पैकेज के अंदर की डेमो क्लास. बट ये तब होगा जब आप अपनी जार फाइल बनाकर किसी को दोगे, तभी वो इसको कॉल कर पाएगा. अदरवाइज ये देखो उसको एरर आ रहा है. Import dummy cannot be resolved. Import dummy cannot be resolved because अभी इस वाले बंदे के पास आपकी जार फाइल नहीं है. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को एक जार फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने कल बताया था. एक्सपोर्ट करोगे, फिर ये जो बंदा है, जो भी ये पर्सन है, he will import your jar file. Once he import your jar file, then only he can use your classes, your packages and your classes. Like you are using someone else's classes and packages, someone else's packages and classes. This is the package, this is the class. लेकिन ये आप तभी यूज कर पा रहे हो because you have already imported this jar file java.time. तो इन पैकेजेस में ये कहीं ना कहीं होंगी. ये आइडियली आपके स्टैंडर्ड पैकेजेस होते हैं, मैथ, टाइम, ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में होते हैं. Guys, any question on this? What are packages? How to use someone else's packages? Maths package, date time package. There are a lot of packages. देखो गुलजार, होता क्या है, मैंने क्या किया, मैंने x इज इक्वल टू 2/3 ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ किया, लेकिन मैंने x की वैल्यू को कहीं प्रिंट नहीं किया, राइट?
तो ये कह रहा है कि आपने x की वैल्यू को कहीं पे शो नहीं किया, मतलब आई एम नॉट प्रिंटिंग इट समवेयर, तो ही इज सेइंग दिस वैल्यू इज नॉट यूज्ड एनीवेयर. If you look at the value of this local variable x is a local variable, it is not used anywhere. ठीक है, it was just computed but it was not used anywhere. This error will be go away if you say print it like this. See, that error is gone. That was not an error, rather that was a warning. There is a difference between a warning and an error. So that was a warning, now it is gone because I'm printing x key value somewhere. Guzar, did you got that? तो यहाँ पर पहले एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है अगर आप देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यू जो मैंने लिखा लाइक नेक्स्ट वैल्यू, और उसके बाद x की वैल्यू जो कि 0 है. तो अल्टीमेटली अगर आपने कोई कैलकुलेशन किया है, अगर आप उसे कहीं यूज ही नहीं कर रहे तो जावा विल टेल यू, कंपाइलर विल टेल यू कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग इट, तो वो वार्निंग दे देता है आपको गुलजार. Okay guys, so we have talked about the like mathematical exceptions. So I started with कि errors होती हैं, exceptions होती हैं, exceptions अलग अलग तरह की होती हैं, right? Arithmetic exceptions हो गई, class not found exception हो गई, कोई आप फाइल रीड करना चाहते हो लेकिन उस डायरेक्टरी में वो फाइल ही नहीं है तो आपको आएगी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. इस तरह के बहुत सारे एरर्स आते हैं. किसी फाइल में आप कुछ राइट करना चाहते हो लेकिन आपको उस फाइल पे एक्सेस नहीं है तो यू विल गेट एक्सेस एक्सेप्शन कि फाइल कैन नॉट बी ओपन एक्सेप्शन. ओके, which access, Nishtha? Like, how can we stop the access? Which access you want to stop? नहीं नहीं, मतलब जावा विल नॉट डू दैट. हाँ, वो तो सिस्टम में आप एक्सेस कंट्रोल लगाओगे ना. जैसे लिनक्स है, लिनक्स में आप कंट्रोल कर सकते हो कि किसको किस फाइल का एक्सेस हो. रिमेंबर आई टोल्ड यू RWX 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 दैट थिंग. तो जावा तो क्या करेगा, वो सिर्फ उस फाइल को रीड करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कोई कंट्रोल लगे हैं तो जावा विल थ्रो यू एन एक्सेप्शन, राइट? अच्छा, now for example if you look my screen, in Java exceptions are very important. In Java exceptions are very important. So I told you Java में मतलब a program can throw two things, either an error or an exception.
a program, when it runs, it throw. So there is a throwable class. So this is a class. Java में कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो वो थ्रो हो जाती है. तो that means it's a throwable object, an object that is thrown. Now whatever is thrown to you, जो फेंका जा रहा है, it can be an error, but I told you errors are very minimal. 99 we talk about exceptions, right? So exceptions can be of different kind. For example, you are doing some input output operation, you will get exceptions. For example, file not found exception. You want to read some file, it is not available. EOF exception, end of file exception, means you are reading a file and you reach till the end of that file, you will get end of file exception. अब इस चीज को हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है कि अगर मैं एंड ऑफ द फाइल पे पहुंच जाऊं तो माय प्रोग्राम शुड नॉट थ्रो एक्सेप्शन, रादर इट शुड टर्मिनेट प्रॉपर्ली. Interrupted exception, you are writing to a file but during that time some system error happened due to which your input output operation got interrupted, so you will get interrupted exception. So these were your input output exceptions. Then you have runtime exceptions. अब ये देखो कि ये रन टाइम एक्सेप्शंस जो रन टाइम पे आती हैं, ये ब्लू वाली कौन सी है, जो कंपाइल टाइम पे आती हैं, इनको हम कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शंस. जो कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शंस आती हैं उनको हम चेक्ड एक्सेप्शंस कहते हैं, मतलब दे कैन बी चेक्ड. बट रन टाइम वाली को यू कैन नॉट चेक, दे आर अनचेक्ड, दे आर अनचेक्ड एक्सेप्शंस. फॉर एग्जांपल, we were talking about that arithmetic exception. There is this null pointer exception. You are trying to point to a object in memory, but that object is not available, so you will get null pointer exception. Array index out of bound exception. Can anyone tell me, at least ये तो आप लोगों को पता ही होगा. Array index out of bound exception मतलब there is an array, you are trying to read from it. For example, it contains 1, 2. It contains 2 elements, but you are trying to read a third element. So there is no third element, so it will say array index out of bound exception. So all of these are logical exceptions only. Okay, but Java में exception handling is very, very important. So let's do that. So guys, if you look at my screen, you got this arithmetic exception and your program terminated. Program terminated without printing the dates. This is very bad. तुम ये चाहते हो कि यार अगर मेरे प्रोग्राम में कोई एक लाइन में कुछ एरर है तो उसको हैंडल कर लो, लेकिन उसके आगे के प्रोग्राम को स्किप मत करो. तो उसके लिए हम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, whether it is Java, Python, C++, R. So we have this try. So there is a concept of try and catch. There is a concept of try and catch. So you will, तुम्हें जिस भी पार्ट में लग रहा है कि एरर आ सकती है, हम उसे ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं. आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि भाई इस पार्ट में एरर आ सकती है राहुल, so let's put it in a try block. That means you will try it. हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे. But we will not stop the program. Okay, very good. But when you try something and say it failed, you need to do something, right? You need to do some operation. Oh, I was trying this, suddenly something happened. Now what I want? So you want a catch block. You want a catch block. You want to catch it. You want to catch it. So when you catch it, you want to do something, right? So
Okay. So now what I did, guys, is this is the line where I have a probability of an error. So I put it in a try block, and after that I put a catch block. In the catch block, I am just printing the error. Print stack trace exception E. I created an object of class exception, and I'm saying E dot print stack trace is just to print the error, whatever is the error. But after that, my program should execute the next lines. It should not stop like it happened earlier. But अभी भी आप देखेंगे तो एक एरर यहाँ पर दिख रही है आपको, x cannot be resolved to a type. ये जो x है, क्योंकि गाइस वो ट्राई ब्लॉक में जा चुका है, उसके बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते. ओके, क्योंकि उसको हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में डाल दिया है. Now let me run it and show you what will happen. See, now what happened, guys, is my program was running. It came here and then it's understood, okay, अंदर थोड़ा डेंजरस कोड लिखा हुआ है, उसमें एरर आ सकती है. कोई नहीं, let error happen. But what should I do if error happen? Print whatever is the error. But then should I terminate the program? No. You should still go ahead and keep executing the next statements. So let's see what happened. So see what happened now. It printed you the error, whatever is the error that happened here, but it did not stop the program. See, it also printed the next lines. So Nishtha, this print stack trace means trace the source of the error, tracing the source of the error and printing it. So this was the source of the error. So ये जो print हो रहा है, this is because of this e dot print stack trace. ये जो मैंने यहाँ पे e dot print stack trace लिखा है निष्ठा, उसी की वजह से ये यहाँ print हो रहा है. Let me comment it. Okay, I'm not doing anything inside it. See what will happen. See, I am trying it, I am doing something, but I'm not handling that. I'm not printing anything. So error print नहीं हुआ, उसके next जो भी lines थे वो print हो गए. मतलब ये वाले programs print हो गए, जो programming statements थे. But ideally that is a bad practice. अगर आप print stack trace नहीं करेंगे, वो एक bad practice है. आपको वो print करना चाहिए. Sir, so if it would not have been an error, it would have still printed it? नहीं निष्ठा, ऐसा नहीं है. जैसे मान लो ये 0 है ना निष्ठा, यहाँ पे let's say it is a variable y, okay, and y value is coming from somewhere else. Int y is equal to 0. Okay Nishtha, you are getting this value of y from somewhere and it is coming here. Now initially the value was 0, so when I ran the program it gave me the error. But now tomorrow when you run this program, y की value is 1. Okay Nishtha, and now when I run this, what will happen? Because y का value 1, 2 divided by 1 is not an error, right? So it will not throw the error, it will not go inside this. जब यहाँ पर error आएगी नहीं, तो ये वाला part में code जाएगा ही नहीं कभी. Okay. Let me sys out x also. Okay Nishtha. See, it's printing you the value 2. But if it would have been 0 and I run this, देखो निष्ठा अभी क्या हुआ. अभी क्या हुआ, y का value was 0, you came at this line here, because it was 2 divided by 0, it printed you the error. But as soon as this error will come, it is not going to execute this. No, it will skip this. Because you get an error here, immediately your program should come where? Here, and it should print this, and then program should keep continuing. But ये वाला जो sys out है, ये नहीं चलेगा.
ये तभी चलेगा जब ये सक्सेसफुल हो जाए। निष्ठा, मेकिंग सेंस? Yes, sir. Sir, so it only catches errors. If it makes errors, only then it will print. एब्सोल्युटली। आप कह रहे हो कि भैया ट्राई दिस प्रोग्राम, अगर ये सक्सेसफुली चल गया तो आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन अगर इसमें कोई एरर आई तो आप उसको कैच करोगे। ओके, यू विल कैच इट एंड हैंडल इट प्रॉपरली। तो कैच में हम सिर्फ और सिर्फ तभी जाते हैं जब कोई एरर आती है। अगर प्रोग्राम सही से चल रहा है तो वो कैच ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होते। ओके guys, anyone, any question? Gulzar, I think you were asking something. Gulzar, you were asking something? Sir, Wait. So Gulzar, if you look here, Gulzar, can you tell me what is java.math? Gulzar, what is java.time, java.math? Gulzar, I told you, right, just now? Very good, Gulzar. These are packages. Like this is mathematical package, this is time package, right? And this is a class. Local date is a class inside the time package, right? Similarly, Java is a programming language. So there is a super package of all the packages. So java.lang. So in Java, lang is language package. Everything is inside, not inside, but this is the parent of all the other packages. Let me show you this. Whenever you create a Java project, Gulzar, not a Java project. Let's create a Java class. Whenever you create a Java class, Gulzar, you see this thing, super class. You are creating a class, for example, demo2. Okay, you are creating this, but it's saying super class for this is java.lang.object. तो किसी भी क्लास की पेरेंट क्लास हमेशा ऑब्जेक्ट क्लास होती है, एंड दिस ऑब्जेक्ट क्लास belongs to lang package. So this lang package is very important, and object is a class inside the lang package. तो जावा में आप इतना समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज, सबसे बेसिक पैकेज कौन सा है, वो है lang पैकेज, दैट इज जावा लैंग्वेज। और उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट क्लास। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज है लैंग्वेज पैकेज और बेसिक पैकेज है, और सबसे बेसिक क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास। सी हियर गुलजार, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, ये भी वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि एक्सेप्शंस, checked exceptions and unchecked exceptions. There are errors. Both of them belongs to throwable, and throwable itself belongs to object. So object is the parent of all the classes. If you look at this diagram also, Gulzar, object class is the parent of all the class. Throwable, then come exception. Exceptions can be of multiple type, whether it's a compile time exception or a runtime exception, right? So as I have been telling, right, Java is a very big field. There are all these important stuff. Any question? Hello.
नॉर्मली एरर्स में गाइस, एरर्स में नॉर्मली दो तरह की एरर दिख रही है आपको, आउट ऑफ मेमोरी एरर एंड स्टैक ओवरफ्लो एरर। मतलब जब आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा डेटा जनरेट हो जाता है और आपका मेमोरी फुल हो जाता है तो यू गेट आउट ऑफ मेमोरी एरर्स और स्टैक ओवरफ्लो एरर्स। एरर्स बहुत कम होती हैं, 90% आर एक्सेप्शंस ओनली। Okay, so this was about exception handling. So what I told you about exception handling, guys, is I would say only 20 to 30% part of the exception handling. Exception handling is a very big field itself in Java. Okay, exception handling is itself is a very big field. Okay, so what we did today, I'm again telling you, we written a program, we saw what are errors and exceptions, and then we tried to handle the errors or exceptions using try catch block. Using try catch block. Other than this, there is a finally block, there is a throw statement, there is a throws statement. These three things are also left. I'm not teaching you that, but this is the most important part, try and catch. Other than that, you have finally, throw and throws. Throw and throws. These are also important keywords, like we have catch and try. With that, I told you that the concept of packages, mathematical operations and date time operations, how to use them. Gulzar, that's what I'm saying. I'm not explaining that. We don't have time to go into all these things. Okay, you can read that. What is throw, throws, finally, okay? But this is the crux of, this is the main part of exception handling. Yeah, Nishtha, tell me. So try and catch, they both come in a combination. Like we cannot use try without catch, or we cannot use catch without try. Block. Very good question. Okay, very good question. So definitely yes, Nishtha, they comes in a combination. Like whenever you have a try, you should have a catch. Okay, because you are trying something and you are saying I will not catch it, does not make any sense, right? But but Nishtha, there is one thing, like one try block can have multiple catch blocks. One try block, it's not like one-to-one relation. One try block can have multiple catch blocks. Okay, that is something important. You can explore it. There is a detailed explanation behind that, but that's a good question. So try अकेला कभी नहीं होता, उसके साथ एक या एक से ज्यादा कैच ब्लॉक्स होते हैं. ओके, दैट्स वन थिंग. दूसरी बात ये भी है निष्ठा कि कोई भी कैच ब्लॉक ना हो तो भी चलेगा, बट देन देर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो निष्ठा देखो, मैं दोबारा बताता हूँ, ट्राई कैच अकेला नहीं होगा कभी भी, उसके साथ एक या एक से ज्यादा कैच ब्लॉक होना जरूरी है. लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे कैच ब्लॉक भी यूज नहीं करना, तो देर इज वन मोर ब्लॉक जो मैंने यहाँ नीचे लिखा था ना, फाइनली. तो या तो एक या एक से ज्यादा कैच ब्लॉक जरूरी है, नहीं तो फाइनली ब्लॉक होना जरूरी है. फाइनली का मतलब क्या होता है कि भाई आपके सिस्टम में कुछ भी एरर
That's not audible. Guys, am I audible? Is my screen visible? Yeah. There was a connection loss. परफेक्ट. हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ट्राई क्लॉज जब भी आपको हैंडलिंग करनी है एक्सेप्शन की, तो वो तो मैंडेटरी है, और उसके साथ या तो एक या एक से ज्यादा कैच ब्लॉक होने चाहिए. बट अगर आप कैच ब्लॉक भी नहीं देते तो फाइनली ब्लॉक देना जरूरी है. फाइनली ब्लॉक कुछ ऐसा है कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आ गया, मान लो इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गया, तो ये लाइन तो कभी एग्जीक्यूट होगी नहीं, राइट? आपका प्रोग्राम सीधा आगे बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा. बट आप कहते हो कि कुछ ऐसे लाइंस ऑफ कोड्स हैं जो आपको मैंडेटरी एग्जीक्यूट करने दैट कम्स अंडर फाइनली. मतलब मैं समझाता हूं. मान लो यहां पर आपने एक डेटाबेस का कनेक्शन बनाया. ओके, यू established a connection to a database here. Okay, to a database here. You are doing you are trying to read a table, but that table does not exist in the database. So you will get an error, table does not exist, right? So your program should terminate. But because आपने exception handling की है, your program will not terminate, rather it will proceed. But अब हुआ क्या कि आपने जो डेटाबेस कनेक्शन बनाया था वो कनेक्शन बना रह गया, क्योंकि टेबल नहीं मिला तो एरर आ गई. और उसके बाद यहां पर आपने लिखा था कनेक्शन क्लोज करने का लॉजिक, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कनेक्शन बन तो चुका है, टेबल एग्जिस्ट नहीं करता. तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेबल आप कर रहे थे, उस समय एरर आ गया कि भाई टेबल डज नॉट एग्जिस्ट. तो कनेक्शन क्लोज आपने की नहीं डेटाबेस के साथ, और प्रोग्राम आपका आगे बढ़ गया. तो इस तरह से कितने ही डेड कनेक्शंस आपके डेटाबेस से बने रह जाएंगे, आप सोचो. तो फाइनली में हम अलग से लिखते हैं कि कनेक्शन डॉट क्लोज लॉजिक, फॉर एग्जाम्पल क्लोज. मतलब कि भाई अगर डेटाबेस लेवल पे कोई ऑपरेशन हो रहा था और वो फट गया, तो हो सकता है कि कनेक्शंस प्रॉपर्ली क्लोज ना हुए हो. तो हम कहते हैं कि फाइनली में जितने भी डेटाबेस कनेक्शंस हैं क्लोज देम. तो फाइनली इज लाइक एरर आए ना आए, मतलब जो भी है कुछ भी हो, मुझे कनेक्शंस तो क्लोज करने ही करने हैं. तो फाइनली का ऐसा नहीं है कि इस एरर आएगा तभी चलेगा. ये सक्सेसफुल चले या ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुल चले या उसमें कोई भी फेलियर हो, फाइनली विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, बिकॉज इसका नाम क्या है, फाइनली. कैच विल ओनली एग्जीक्यूट व्हेन देयर इज एन एरर इन द ट्राई ब्लॉक, बट फाइनली विल ऑलवेज एग्जीक्यूट. Guys, getting it, निष्ठा? ट्राई ब्लॉक में अगर एरर आएगी तभी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन फाइनली ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ लॉजिकल कारण है जिनकी वजह से वो बनाया गया है. ठीक है, तो हमने फाइनली पे भी थोड़ी बात कर ली यहाँ पे, बट थ्रोस के लिए हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, ये सारी चीजें पाइथन में भी अवेलेबल है. So you should read about it, exception handling in Python. But Python की exception handling is not that advanced like Java. Okay, guys, any other question? We have seen exceptions, exception handlings, date time functions, packages. Okay. I think I'm done with that from the Java's point of view. Yesterday we created the Maven project. We were able to successfully build it.
Some of you were able to run it, some were not. Please try it. There is a minor configuration thing that will run even that program also. You created the jar files also and all those things. Okay. Okay. What Nishtha is asking. So, but there we have if else. No, 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 no. No, Nishtha. No, no, no. If then else तो यहाँ पर भी है. If then else is separate. Try catch is separate. Nishtha. See. So if you look at Nishtha, it's also very similar. You create a function and that function is trying to do x divided by y. You never know कि भाई बाहर से user y की value कभी भी कुछ भी दे सकता है. So you are putting it in a try block, right? You're putting it in a try block, and then this is the catch. There catch is just replaced by except word. So you try this, but you don't know कि user कल को यहाँ 0 अगर pass कर दे जैसे यहाँ किया. So you want to handle it, and here it's 0 division error and printing E. So this E which is printing is the stack trace in Java. Nishtha, making sense? See, division by 0. If then else is a different thing. Okay. So this is what the full code in Python is. You try something, you catch it, execute this code only when there is an exception. See, only and only when there is an exception. And then there is a finally. Always जैसे ही ट्राई कंप्लीट हो जाएगा एरर आएगी तो ये रन होगा और एरर आए ना आए कुछ भी हो ये तो रन होगा ही होगा. ओके. ये एक एल्स वाला पार्ट अलग है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. वो कहता है कि ट्राई दिस, अगर एरर आई तो ये रन करो, एरर नहीं आई तो ये रन करो, लेकिन इसको दोनों केस में रन करो. तो ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली. थोड़ा और उन्होंने मतलब पाइथन ने थोड़ा और उसमें एडिशनल फीचर डाल दिया. समझ रहे हो? कोई क्वेश्चन है अभी भी? इसीलिए मैं कहता हूं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, अच्छे से सीखो. आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हफ्ते में सीख सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे सेम है. प्रोग्रामिंग सिंटेक्स बदलेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे. ओके. I think there is no doubt. Karan, you have any question? Karan, any question? Okay, no, thanks. Okay, guys, so we are done with the Java. Unless किसी को कोई question हो, they can ask me any day. But there are a lot of things in Java. So read about exception handling. I'm telling you the topics. Okay. So exception handling is very important. And then there is file IO. File IO matlab reading the data from a file and writing to a file. Okay. In Python, it is very easy. You have pandas package, but in Java, it's not easy. So there is a file input output operation, file IO that you do. And then there is this date time handling that I just told you. There are math package. You can practice that. There is inheritance, which we talked about in the last class. The difference between public, private, and protected keywords. Okay. These are some of the important things. Difference between error versus exception in Java. Okay. These are some of the important things. Now, Nishtha, go ahead. Sir, you have a YouTube channel of Hadoop classes. Should we refer to that or we don't need it? You can refer to that, but you don't need it. Yeah, definitely.
बिकॉज ऑलरेडी मैंने सब यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है, तो उसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है। Okay. ओके, आप रेफर कर लेना, उसमें कुछ टॉपिक्स अलग हैं मेटा स्टोर के बारे में, जैसे हाइव मेटा स्टोर के बारे में बहुत डिटेल्ड एक सेशन है जो मैं यहाँ नहीं कवर करता, वो सिर्फ बिग डेटा डेवलपर्स के लिए है। ओके, सो नाउ गाइस वी आर I'll share it, Gulzar, I'll share it. अच्छा, so we are done with Hadoop, okay, everything so far. Now today we are going to do one project in Hadoop, okay, one project in Hadoop which is using Hive, and then from tomorrow we will start Spark. So there are two things, okay, Hadoop and Spark. That's how this entire thing is, Hadoop and Spark. Wait, Nisha, 2 minutes. Huh? So now you all can open your virtual machines and we will take a 15 minutes break. After that we will connect. But before that I'll tell you the project that we are going to do. So this is the project, application store data analytics using Hive. So Nishtha, is this the project guys? मतलब आप लोगों के पास कोई और प्रोजेक्ट है तो मैं वो करा सकता हूँ, कोई और लिंक है, कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, या मैं ये वाला करा दूं? हाँ, चेक कर लो एक बार, फिर हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। मैं इसका लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, एक बार ये भी चेक कर लो। आप लोगों के पास कोई और है, आप चाहते हो मैं वो वाला कराऊं तो मैं वो वाला करा दूंगा। सर आप अभी हाइव वाला प्रोजेक्ट करवाएंगे कि स्पार्क? नहीं, अभी तो हम हाइव खत्म कर रहे हैं ना, मतलब हडूप खत्म हो गया हमारा, तो हडूप का हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हडूप का प्रोजेक्ट करने के देखो अलग अलग तरीके हैं, या तो मैं पिग से कर सकता हूँ या मैं हाइव से कर सकता हूँ। अगर एचबेस का है मैं एचबेस से कर सकता हूँ, उसमें स्कूप की जरूरत है मैं स्कूप यूज करूंगा, नहीं तो मैं जावा मैप्रेड्यूस से भी कर सकता हूँ। ओके, बट एज अ डेटा एनालिस्ट एसक्यूएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, तो हम हाइव से करेंगे। ठीक है, तो दिस इज हडूप प्रोजेक्ट यूजिंग हाइव। ओके सर एक्चुअली हमें जो ब्रोशर मिला था उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन, हमारे एलएमएस पे अलग है। हाँ, उसमें उसमें क्या लाइक मैं हाँ बताओ। सर उसमें एयरलाइन ट्रेंड्स एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इन हाइव है। वी डोंट नो, वी हैवंट गॉट एक्सेस टू दैट इन आवर एलएमएस। एलएमएस में कुछ अलग है। हाँ, नो प्रॉब्लम। दामिनी, इफ यू आर देयर, मतलब अगर आपके पास उसका लिंक है, दामिनी यू आर देयर? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी तो ये वाला प्रोजेक्ट करते हैं बिकॉज प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट, and then we will ask Damini to share us the data, okay, and the problem statement, and then we will solve that also. ठीक है, तो आप लोग बस दामिनी को बोलना कि उसका लिंक शेयर कर दें और हम उस पे भी काम कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाफ एन आवर एट मैक्स। ठीक है गाइस, तो आप लोग ब्रेक लेते हैं हम 15 मिनट का, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेना इतने में, तो हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल आई एम, दिस इज द डेटा सेट, तो ये हमें हडूप में पहुंचाना पड़ेगा, we will do that, and okay, so we are taking a break for 15 minutes.
Hello guys, we are getting started. So what you can do, first of all, read the problem statement. So this document is the problem statement. This is actually the same, and this is the data that we have to use. So you can download all of these, and you can look at the data also. It contains like 4 columns of what that data represents. Please try to understand. For a airline company, okay, say for example, you are working for a airline company and that company wants to increase its revenue. So they want you to help them with the analysis. They are giving you the data that for every year there are 4 quarters. Within each quarter, how much revenue they had per seat and what were the total number of seats. Okay, so this is the total number of seats that were booked in this particular quarter, and this is the revenue that they got per seat. Okay, per airline seat. Now they have certain questions. These are the questions which they want you to answer. So they want you to do some Hive query, some SQL queries to do this analysis. But the problem is that this data is on LMS. We need to move this data on the virtual machine, and that too on the HDFS. So what I am doing is I have this file, the CSV file. I am putting it on my GitHub, and then using wget command, I will download it on Linux. Okay, I hope that is pretty much clear. So I'm just using the GitHub and moving that file over there. I will share this link to all of you. So this data is uploaded to my GitHub account. So guys, please do this. Hello. Yes. Okay guys, I hope all of you are aware about the wget command. Please use the wget command on your Linux and download this file. Guys, am I audible? My screen visible? Okay, okay. So please download this data.
No, Nishta, I don't know what you missed. This is what I'm saying. This is the LMS file, okay, but this is a zip file, right? So I unzipped it, and when I unzipped it, this contains this particular file. Okay, so this CSV file, I put it on my GitHub account so that you can use wget command to download it. Because LMS does not allow you to download it on Linux. Okay. Okay, guys. So I have logged into my different machine now, where I have this thing running, the Hadoop machine. देखो अभी हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है. आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर दी जाएगी, उसके साथ आपको बिग डेटा दिया जाएगा या डेटा दिया जाएगा. वो डेटा सबसे पहले तो आपको अपने हडूप में पहुंचाना है. तो ओपन द टर्मिनल and then use wget command. Use the wget command and download the data. Okay. From website earlier हमने टाइटैनिक का डेटा डाउनलोड किया था. This time we have downloaded the airlines data. Okay. So this is the link, and then I got the CSV file. Let me do ls. Okay. So what I'm doing is I'm using the wget command and getting this data. This is the one. Okay. Resolving row. This. It gave me error. Okay. Connecting to raw GitHub user account. Connected error. Certificate common name GitHub doesn't match the requested host name. This. ये चीज हमने एक बार पहले भी की थी. If you guys remember. You will use wget with no certificate checks. So this is done. Okay. अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे भी Eclipse अवेलेबल है. यहाँ पर because everything is Java, right? Hadoop, big data Hadoop, everything is Java, so you can do Eclipse coding here also, and then you can create jar files and run those jar files here. You can see there are Java files which I created some time back. Customers.java, department Java, Java, lot of Java files. Okay.
आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर इंटरनेट एक्सेस कर लें यहाँ से। वही आरके ट्रोजन का गिटहब अकाउंट, मेरा गिटहब अकाउंट खोल लो यहाँ पे। मेरे गिटहब अकाउंट में जाओ, वहां पर फाइल पड़ी है अंडर दिस प्रोजेक्ट्स फोल्डर। So guys, go to my GitHub account. In my GitHub account, there is projects. In that projects, you have this data file. Click on that data file. You will get this file. Click on this raw, the raw option. This is the file. So आप लोग यहाँ से कॉपी कर लें वो लिंक, यहाँ से कॉपी कीजिए और wget कमांड यहाँ चलाइए, ठीक है। निष्ठा and all those who may have this problem. तो मेरे गिटहब अकाउंट में ये फाइल पड़ी है, वहां जाओ, वहां से लिंक ले लो। ओके निष्ठा, wget के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना है करण, द लिंक विच वाज देयर, कुछ भी नहीं करना आपको, बस wget कमांड और उसके बाद ये लिंक। तो इस लिंक पे जो फाइल होती है वो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन wget कमांड करते समय कई बार सर्टिफिकेट एक्सेप्शंस आ जाते हैं करण। तो अगर सर्टिफिकेट एक्सेप्शंस आपको आ रहे हैं तो वो खुद ही आपको एरर में बता देगा। जैसे ये एरर आया था, देख रहे हो, ये एरर आया मुझे, वो कह रहा है कि देयर आर सम सर्टिफिकेट इश्यूज। तो अगर आपको उसको इग्नोर करना है तो ये एडिशनल एक फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दो अपने कमांड में, एकदम एंड में, _ नो चेक सर्टिफिकेट। wget नो चेक सर्टिफिकेट एंड देन द लिंक। उसके बाद आप एलर्ट करके देखो, फाइल दिख रही है, ये रही, ठीक है। लेकिन ये फाइल का नाम बहुत बड़ा है। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू रीनेम अ फाइल इन लिनक्स? I want to rename this file as airlinedata.csv. Anyone know the command? So guys, there is this command, move command, mv. So there is this mv command. Okay, so move command will do what? It will rename this to the new name. Let's say I am saying airline data.csv. That's it. Now if I do ls, here is the file. ये वाली फाइल इस फाइल में रीनेम हो गई। I'll wait for all of you to please confirm if you have done this. Yeah, Gulzar, I'm waiting. Okay, Rahul. Very good. अब देखो, अब आप लोगों को क्या करना है guys? You have to move this file in HDFS. तो I am not going to tell you the command. ये जो new file है, put it in HDFS. Those of you who know, they can move it. And then you have to create a Hive table on top of it. That's it. गुलजार, हाँ बताओ क्या डाउट है आपका? एक्चुअली वो मेरे क्लाउड एरा में वो अनएक्सपेक्टेड इनकंसिस्टेंसी आ रहा है कि उसको ओपन करने में
कि ओपन करने में ही फेल है। आप कह रहे थे ना वो तो हो गया था रिजॉल्व, वो ओपन हो गया था। सर पर फिर उसके 2 दिन बाद वो फिर से, पर उसके 2 दिन बाद कोई नया एरर आया कि वो ओपन ही नहीं होता। अब ये लास्ट 2 डेज से ऐसा हो रहा है। एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, दोबारा ट्राई कर लो, ठीक है, एंड देन यू कैन जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड देन यू ओके कैन सर। रिपीट। ओके, तो गाइज देखो, कभी भी आपके पास डेटा फाइल होगी वो इंटरनेट पे होगी, प्रॉपर एक लिंक चाहिए आपको गिटहब का या कोई लिंक जहां से आप उसको डाउनलोड कर सको। wget से आपने डाउनलोड कर लिया, उसको रीनेम कर दो अगर बड़ी फाइल है तो, HDFS में मूव कर दो। वेरी गुड राहुल। HDFS में मूव करने की कमांड क्या है अब? HDFS DFS -ls and then the file name. My file name is airlinedata.csv. So moving this file, not ls, sorry, HDFS DFS hyphen put this file, and where you want to put it, you want to put it, you can say dot. आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी सही है, डॉट भी लिख दोगे तो भी इसका मतलब है हडूप में जो क्लाउडेरा यूजर का होम फोल्डर है उसमें चला जाएगा। ओके, तो इट्स डन। या राहुल, again Nishta, that's what even I think you faced last time also, ki it may be because of some default setting, some firewall setting, maybe n number of network related things which I have to look into your machine, then only I can tell. Okay, sometimes the virtual machine have certain settings which directly allow you to access a website. For example, कुछ लोग डेटा कॉपी नहीं कर पाते एक जगह से दूसरी जगह, right? Like from outside of VM to inside of VM. So it's all the VM settings which either protects this or allows this. But it's good that you should be aware about it, so that in future if you get this certificate issue, you should know how to resolve it. Okay. So now guys, we have moved this file in the Hadoop. Okay. But let's see कि वो Hadoop में गई भी है कि नहीं, right? So what I will do, I will say okay, HDFS DFS -ls and अब ये फाइल जो है मेरी हडूप में जा चुकी है। Okay, my file is in Hadoop. Now I want you to tell me what to do next. Anyone? File is in HDFS. What to do next? Guys, if file is in HDFS, what to do next? Yes, Karan. We have to create a Hive table. But how will I create a Hive table? Can anyone tell me? Do I know the schema of the Hive table? I don't know the schema of the Hive table, right? Means how many columns? Very good, Gomini, very good. Yes. So that's what I need to do. I need to look into file and get the schema. Like how many columns, what is the data type of the columns, and do my file contain header, because I have to ignore the header otherwise. And what is the separator, file separator, whether it's a control A, because Hive is control A separated by default, or is it comma, right? So there are a lot of things that I need to take care of it. So yes, I have this airline data.csv here. Perfect. But I need to see its content. So I have this file on the local also, local Linux. So I will see the content on the local Linux, not on the HDFS. So using cat command, I will see the content, but if the file is very big, cat is not a good command. So what should I use, Gomini, instead of cat? Because cat will open the entire file. I should use something else. Aditi, Gomini, any idea other than cat? What command can I use? Very good, Gomini. More command, more. Okay, more is like pages.
वो बुक की तरह खोलता है आपकी फाइल को, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल सी, ये पहला पेज खोल दिया उसने, 45% of the data, and now I press enter, or maybe next, so it will keep showing me the next lines. Okay, but what we saw here, this is the schema, right? The column names. The another thing is I need to ignore this first line because otherwise it will be a problem. ये लाइन डेटा की तरह लोड हो जाएगी हाइव में, मुझे इसको इग्नोर करना है। माई डेटा इज कॉमा सेपरेटेड, तो हाइव टेबल बनाते समय मुझे बताना पड़ेगा कि सेपरेटर शुड बी कॉमा इंस्टेड ऑफ कंट्रोल ए। ओके, so we are good to go ahead and create the hive table. So I am copying this schema. I am copying the schema. Press Q and come out of more. Press Q and come out of it. Open the nano editor. Open the nano editor. Paste the schema. And I am going to write the create table. Table is airlines. Okay. Create table. Table name is this. Now this is my schema. Column year. Year is of what kind? If you looked at the data, everything is integer. So this is int. Year is an integer. Quarter is an integer. Average revenue per seat. So guys, one thing to remember is your column name should not have a space. So average revenue per seat. So let's make it simple. Average revenue. So I'm making the column name like average revenue per seat. You can give the column name like this, right? Making it simple. Average revenue per seat. And can anyone tell me what is the type of this column? Can anyone tell me the type of this column, the data type? Should it be integer? Look at the data and tell me. Look at the data and tell me. No, it's not integer. It cannot be string. Yes, Gomini, correct. It can be float or a double. Yes, Nishta, very good. It can be either a float or a double. So because it's a smaller decimal places, I can have float, but I can put double also. Otherwise, decimal values will be lost if you make it int. Now, total number of booked seats. Total number of booked seat, again, column name should not have spaces. So I am saying total number of booked seats. Now this should be what, guys? What should it be? Int, float, double, string. Very good. It should be int. So I have created a table with the schema, proper schema, but there is a separator, right? Comma separated. So I need to say row format delimited, fields terminated by comma. Okay. So whenever you are discontinuing from one line to another, or rather when you are continuing from one line to another, you should put a backslash so that Hive will know that this command is yet to be completed. तो कभी भी अगर आप एक लाइन में से दूसरी लाइन पे जा रहे हो तो एक बैकस्लैश लगा दो, उससे हाइव को ये पता लग जाता है कि अभी मेरा कमांड कंप्लीट नहीं हुआ.
Gomini, just type nano and enter. Okay. So create table name, column names with data types. And now the row format is delimited because you have a delimited data where your fields are terminated by comma. Okay. So that's what you have to do. But there is one more thing. You have to skip the first row. You have to skip the first row. So we have to put a table property. If you remember, there are survey properties and table properties. So in this table property, there is a property like skip header, and we will say okay equal to true. Okay, so this is what the complete command is. Create table name this, schema is this, row format is delimited, and fields are terminated by comma. And within table properties, I am saying skip header to true. Make sense, guys? This much? Any doubt on this before I run it in Hive? Any question or doubt on this? Okay, so I'll take it as no doubts. I'm copying this and coming out of it. So Abhi, what I need to do now, I need to go first inside the Hive. So we will now go inside Hive, type and go inside Hive. Okay, we are going inside Hive. Sir? Yes. Sir, can you explain this from row format delimited? Yes, sure. Tanya, you can use anything, VI editor, nano editor, मतलब ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है. मुझे तो बस वो सारी कमांड एक जगह लिखनी थी आप लोगों को समझाने के लिए, तो इसलिए मैंने वो यूज किया. Okay, मतलब there is no such reason. If you want, you open the VI editor and paste it there. So that's it. अभी मैं ये सेंड करूंगा निष्ठा. एक्चुअली ये अभी फाइनल नहीं है, इसमें थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस करने हैं. ये तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए कमांड लिखी है ना. अभी इसके सिंटेक्स को सही करना है. जैसे ये कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर आएगा, ये टेबल प्रॉपर्टीज इसके हेडर ट्रू, ये इसमें ये भी सिंगल कोट्स में आएगा. ठीक है, इसमें भी कॉस्मेटिक चेंजेस करने हैं थोड़े, मतलब कॉमा वॉमा मिसिंग है इसमें, वो मुझे लगाने हैं. करण, उसमें आप करो कंट्रोल एक्स एंड वाई. अब होता क्या है करण, वो क्योंकि हमने सीधा नैनो में घुस गए बिना किसी फाइल का नाम दिए, तो वो आपसे नीचे देखो फाइल का नाम पूछेगा, तो उस फाइल को कुछ नाम दे दो. मैंने उसको नाम दिया है DDL, हाइव DDL करके उसको नाम दे दो, फिर एंटर मारो, हो जाएगा, वरना वो एग्जिट नहीं होगा करण. तो कभी भी करण आप नैनो एडिटर में अगर बिना फाइल का नाम दिए घुसते हो और उसके बाद उसमें कुछ भी टाइपिंग वाइपिंग करते हो, फिर जब आपको एग्जिट करना है ना, आप क्या करोगे, आप कंट्रोल एक्स करोगे, फिर आप वाई प्रेस करोगे, तो वो कहेगा फाइल नेम टू राइट, क्योंकि आपने फाइल नेम तो दिया ही नहीं. तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ हाइव DDL, उसका नाम दे दो हाइव DDL, और फिर एंटर मारो एंड यू विल डू ls. here is the file hive DDL. तो you can directly run this file hive -f and then this file name जो हमने पिछली क्लास में बात की थी.
बट वो कमांड अभी कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ पंक्चुएशन एडिटिंग जैसा निष्ठा कह रही है, हमें वो करना है। ठीक है, सो वी आर इनसाइड हाइव. So let me paste that hive command here. See, I am saying create table, table name, all the information, row format delimited, field terminated by so and then semicolon and enter. See, so this is running the query, but it failed because I told you there are some minor changes. Mismatched input, this expecting string literal nearby. ये देखो, ये by field terminated by के बाद उसको कॉमा मिला, वो कह रहा है भाई इसको सिंगल कोट्स में डालो. क्या कर रहे हो, यहाँ पर उसको स्ट्रिंग चाहिए, वो कह रहा है कि ये तो उसको कॉमा मिल गया. दिस शुड बी अ स्ट्रिंग, मतलब विद इन सिंगल कोट्स, शुड बी अ स्ट्रिंग लिटरल, अ स्ट्रिंग वैल्यू. तो वही मैं आपको बता रहा था कि वो माइनर चेंजेस अभी मुझे करने. तो मुझे क्या करना है, ठीक है, पहले तो ये, तो अभी पहले इतना ही रन करके देखते हैं अब क्या फटता है इसमें. सी, अब इतना तो चल गया, लेकिन अब जैसे मैंने बोला स्किप हेडर ये वाला पार्ट अभी सही नहीं है. तो वो कह रहा है भाई ये स्किप हेडर में क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये टेबल की प्रॉपर्टीज का पार्ट ही नहीं है. तो ठीक है, we need to do that also. तो अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको बोला इसको भी सिंगल कोट पे डालना है, राइट. So everything is simple and we want to go one by one. Skip header, true. So let's see and run this. Mismatched input true, expecting a string literal in a key value. अब वो कह रहा है ट्रू को भी सिंगल कोट्स में डालो. ठीक है, तो डाल देते हैं. Let's run it now. Okay, let's look at it again. Create table, table name, the entire syntax. Row format delimited means all the rows in the file, file जो होगी उसमें rows will be delimited, and the fields inside that row will be terminated by commas. Then table properties or TBL properties is like skip header equals to true. Now it's showing a pass exception. Line 1, 128 character are not supported here. Okay.
So it's saying this backslash is not supported. Sometimes it's not supported, but ideally it's supported. So that's not a problem. If you get such error, you have to just make everything in single line. You have to make the entire syntax in a single line. Copy it, paste it. Okay? Ideally, this is a good way of coding, but sometimes systems don't understand this. So you have to put everything in the same line. So that's I did. Now I'm running it. Oh. Some part of the code was not copied. होता है ये. That's fine. Perfect. Okay, so we are done. So guys, if you look at, there were small errors that we resolved one by one. You say create table name, give the schema, then you'll say okay, row format is delimited, fields are terminated by comma, and in the table properties at the very end, okay, you are saying skip header is equal to true, means the first row should be skipped. So now let's do what? Describe formatted the airlines table. We will describe it formatted, and what we will see is these are the 4 columns. This is the location of the table. It's an internal table. Skip header is equal to true. Okay, this is the property you want to skip header, which is true. And field delimiter is comma. Okay, we are good to load the file here. So now what we need to do, we have to move that file inside this table. So we have to move that file at this path, right? So I'll copy this path. I'll go to HDFS. So guys, this was my file, right? This was my file. So what I will do, I will say HDFS DFS hyphen put the airlines file at this particular location. तो पहले आपने जो put कमांड चलाई, आपने blindly चला दी. आपने सोचा ही नहीं कि यार ये फाइल कहाँ मूव करनी थी. आपने कहाँ करी मूव? अपने Hadoop पे अपने यूजर के फोल्डर में. बट वो सही चीज नहीं है. Ideally, you first create the table, copy its location and put it at that particular path. Getting it? So you should avoid putting the file at any random location. You should first create the table and then put the file. Okay? और else देखो, इससे पहले आपने क्या किया, ये आपका लिनक्स था और ये आपका Hadoop था, मान लो आपने यहां से किसी भी रैंडम पाथ पे वो फाइल डाल दी, जबकि टेबल आपका इस फोल्डर पे पॉइंट कर रहा था. तो आइडली यू शुड मूव इट डायरेक्टली हियर. और else if you have already moved here, you can move from here to here also. Okay, but I want to avoid all those things कि आप पहले यहाँ मूव करो फिर यहाँ से टेबल में मूव करो. क्यों करना है इतना, 2 स्टेप क्यों लेने हैं? आप सीधा लोकल लिनक्स से टेबल के अंदर ही लोड करो ना. गाइस गेटिंग इट? यस और नो? आपने जो पहले किया था उसमें आपने रैंडम एक पाथ पे डाली, फिर वहां से आपको यहाँ डालना पड़ता. तो बेटर इज यू शुड ऑलवेज मूव इट डायरेक्टली इन द हाइव path. So first create the table and gets its location. Rahul, you got it because you were the first person to answer that question, how to put it. Rahul? Perfect, thanks. Okay, so we should avoid doing that command, though you were right. You told me the right command, but yes, we should always use this command. Okay, so
Guys, I'll share all these codes one by one, but let's first complete it. So now we are moving it directly inside the table. Once it's loaded inside the table, we will see the data. Okay, जितने ये चल रहा है, let me share the code with you. तो गाइस मैंने आपको क्रिएट टेबल का सिंटेक्स भेज दिया है, उसको रन करो, उसको खुद से सही कर लेना। उसमें एक तो एंगल ब्रैकेट्स लग गए हैं बीच बीच में, वो हटा देना। एंगल ब्रैकेट से मेरा मतलब है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उस कोड में लग गया है, वो हटा लेना खुद से। रिमूव दिस सिंबल्स फ्रॉम दैट कोड। मतलब आइडली यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू नो दीज थिंग्स, डोंट कॉपी पेस्ट एंड रन इट। Then do the describe formatted, copy this location. Okay, once you do that, run this command. Okay, so my data is already loaded. आप लोगों को कमांड चला लो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। टेबल बना लो और फाइल को टेबल पे मूव करो इंस्टेड ऑफ मूविंग इट इन एनी रैंडम पाथ ऑन HDFS.
Guys, please let me know if you are able to load the table, and if you are looking at the data like this. Like when you are doing select star from the table, you are looking at the data. Are you all able to see that? "86 rows." Gulzar, I didn't get you what you are trying to say. Which command you tried and what you were trying to install and uninstall? No. But where you ran that command? So are you able to log into your VMware first of all? आपका क्लाउडेरा ओपन हो रहा है अभी भी या नहीं हो रहा? Because I am saying कि क्लाउडेरा को रीस्टार्ट कर लो. हाँ, मतलब वो मशीन का ही आपका इशू है. आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट. सर अच्छा एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार इसको व्यू कर लो एक बार, फिर उसके एक बार. No, you are saying that it's not getting started, right? यस सर. I cannot do anything, Gulzar, because I have already looked at it multiple times. What I'm saying is there must be some setting issues. Google it, try to resolve it. So, but this time some new type of error in opening it. Okay. मतलब फिर तो जहाँ से हमको भेजा गया था उसी को फिर इसको डिलीट करके दोबारा डाउनलोड करके करूँ फिर? ऐसा नहीं है ना, जो आपको एरर आ रही है उस एरर को गूगल करो एंड सी हाउ टू रिजॉल्व इट. फर्स्ट ड्रिल डाउन टू दैट एरर. सर एक बार आप व्यू करके देख लो, फिर बता दो कि मैं किस बात को गूगल करूं. एक बार इसको व्यू कर लो. Gulzar, you are presenter, huh? Guys, please let me know if you are able to create that table, move the data, able to see the content, so that we can start with that problem statement. गोमिनी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पहली रो में नल 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 दिख रहा है. दैट मीन्स कि हमारा जो हेडर था वो इग्नोर नहीं हुआ. तो जो स्किप हेडर इज इक्वल टू ट्रू वाली हमने लाइन लिखी है वो काम नहीं कर रही. तो आई विल टेल यू हाउ टू रिजॉल्व इट, बट प्लीज ऑब्जर्व दैट 86 रोज आ रही होंगी, लेकिन फाइल में देखो 85 रोज है. अगर हेडर हटा दिया जाए तो 85 होनी चाहिए. Okay, so I'll tell you how to resolve it. Meanwhile, Gomini, please read the problem statements. आखिर हमें क्या SQL लिखने को बोले गए हैं, and then I will tell you कि अब क्या SQLs हमें लिखने हैं. Okay. So Gulzar, what's the error? 1 second. You are saying starting. An error occurred during the file FSS, dropping you to the shell. The system will reboot. When you leave the shell, give root password for the maintenance or type the control D to continue. So you know the root password? Okay, leave it. Type in Cloudera there. और यहाँ रूट पासवर्ड जहाँ लिखा हुआ है इसी में टाइप करूँ, इस VMware में टाइप करना है? Yes. सर यहाँ तो कुछ नहीं टाइप हो रहा. वो टाइप होता है, आपको दिखता नहीं है. आप क्लाउडेरा टाइप करो, एंटर मारो. कर दिया क्लाउडेरा टाइप करके, एंटर. ठीक है, कुछ नहीं हुआ.
कुछ नहीं हुआ तो कंट्रोल डी करो और बाहर निकलो यहाँ से। कंट्रोल डी। व्हाट हैपेंड? सेटिंग्स वो खुद ही बंद हो आई गया? है अब तो। नहीं सर, कंट्रोल डी करने पे वो सेटिंग्स आ गई उसकी। हाँ, इसको रिस्टार्ट कर लो। इसको सर थोड़ा, भाई हाँ, रिस्टार्ट कैसे करूं? ओके 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 पे क्लिक करो। आप एक बार एंटर करो ना, मुझे ये हो क्यों नहीं रहा है आपका? हाँ तो हो रहा है ना। आप यहाँ पे जरा पासवर्ड टाइप करो, क्लाउडेरा लिखो, एंटर मारो। हो गया ना? एंटर एंटर प्रेस एंटर। सर किया है एंटर। अब यहाँ हाइव टाइप करो। क्या एंटर करूं? हम्म वेट। रन अ कमांड FSC के, रन अ कमांड FSC के, एंटर। फिक्स यस, टाइप Y एंड एंटर। यस। सिर्फ वाई प्रेस करने से ही हो रहा है। इसको भी यस हाँ, करूं? यस। ब्लॉक्स वाई। डू इट, कीप डूइंग यस। अच्छा Keep doing it, keep doing it. It will happen for only a few times because your Linux got corrupted. Okay, your Linux OS got corrupted due to certain restarts or memory failures. For that, we are doing the file system checks at the OS level, and then there are some directories which are known as inodes, which are asking you for fix. So you keep saying yes, yes, yes. They keep getting कर fixed. अब यहाँ Okay. क्विक स्टार्ट जो आ रहा है। Now it's done. Okay. Now just do restart. Type in the command reboot. एंटर करूं? हाँ, yes. ये तो अपने आप हो तो होने दो, कोई इशू नहीं है। ऐसा लगता है अभी आगे ऑटोमेटिकली हो रहा है वाई वाई से। हाँ हाँ, वो आपका मशीन रीबूट हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दिस थिंग्स एक्चुअली टेक टाइम, गुलजार। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज you need to delete this and download it again, which Gomini provided, right? And use सर the new one. सर Okay. ओके सर फिर Such system failures need time to resolve. So you better use the another machine. Download it afresh. Okay. मीन्स अनदर वर्चुअल मशीन। Yes, download the virtual machine again.
Okay, sir, I will do it after the class then. No problem. The older one somehow got corrupted. Yeah. Okay, so Nishtha, which error are you getting? Make me the presenter, Gulzar. Okay, sir, just a minute. Nishtha, can you ping me the command so that I will help you? For which command you are getting the error? You must not have removed those angle brackets. I told you to remove certain angle brackets. Yes, sir. I cannot copy paste it out of virtual machine, so it's showing for bracket only. Unexpected token. Ping me the command, I will help you. Oh, you are not able to do that. Okay, wait. Okay, no problem, Nishtha. So I'm making you the presenter, Nishtha, and it will be just very minor thing. Show the screen. Where is the command? Show me the command. Instead of me telling what the error is, can anyone else tell her what is the error? Maximize it. Guys, can anyone else help Nishtha? Clearly error हमें दिखा है सामने. Very good. Yeah, Gomini Nitika, you are right. So Nishtha, आप पहले Hive में ही नहीं गए हो. Why you are typing it like this? You should be inside Hive. आपकी क्रिएट स्टेटमेंट हाइव के अंदर चलना चाहिए. आपने वो पूरा का पूरा हाइव के साथ सब लिख दिया. This happens. Okay. Hello. Yes, sir. From? Yes, sir. Okay, tell me. Yeah, Nishtha. So what I was saying is, are you inside Hive now? Type in Hive. अरे राहुल, उसने कॉपी किया रे. She just copied that Hive. मतलब she have written it manually ना. इसलिए. Sir, I've written it manually, so I just copied it. I got it. So आप एक बार एंटर मारो. हाँ, अभी हाइव टाइप करो. दिख क्यों नहीं रहा प्रेस होता हाइव? I don't know, sir. एक नया टर्मिनल खोलो. ये आपने कभी इतना छोटा सा क्यों कर दिया? इसको बड़ा करो ना, क्विक स्टार्ट को. सर एक्चुअली राइट साइड पे स्क्रॉल नहीं दिख रहा. कुछ टाइप ही नहीं हो रहा. हाँ, हो गया. अभी देखो निष्ठा, हाइव के अंदर ही तो क्रिएट स्टेटमेंट लिखोगे ना. आप हाइव के बाहर ही लिख रहे हो. सर एक्चुअली आई कैन नॉट फाइंड माय कर्सर. आई डोंट नो व्हाट इज. नहीं, वो होता है, ऐसा हो जाता है. बट नाउ इफ यू डू दैट, मैं आपकी एक बार एसक्यूएल पढ़ रहा हूँ, रुक जाओ. क्रिएट टेबल दिस रो फॉर्मेट डिलिमिटेड, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय दिस, टेबल प्रॉपर्टीज. ठीक है, सब सही है. बस टेबल प्रॉपर्टी से पहले आपने वो ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया ना. मैंने बार बोला था वो गलत है. जो क्रिएट, कॉपी करो, क्रिएट वाला कमांड पूरा कॉपी मारो. हाँ, अब आपने, हाँ, इसको कॉपी कर लो और इसको नैनो एडिटर में पेस्ट मारो. चलो यहीं पेस्ट कर दो, कोई नहीं. पेस्ट. हाँ, अब इसको अभी सर आई कैन नॉट स्क्रॉल इट डाउन. कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंटर मार दो. एंटर मारते रहो.
बस चल गया ना, बस 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 बस। अब देखो, आपने सबसे एंड में सेमीकोलन से पहले ग्रेटर देन का सिंबल क्यों लगा दिया? वो पहली गड़बड़ हुई, ठीक है। Where, sir? अरे, सेमीकोलन से पहले आपने ग्रेटर देन का सिंबल लगा रखा है। Yes, sir. अच्छा, ठीक है। एक तो वो गड़बड़ है। वेट वेट, एक और है। टेबल प्रॉपर्टीज से पहले भी आपने ग्रेटर देन का सिंबल लगा रखा है। Table property. टीबीएल प्रॉपर्टीज, टीबीएल प्रॉपर्टीज। Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये दो ग्रेटर देन के सिंबल जो आपने लगाए हैं, यही गड़बड़ कर रहे हैं। इनको हटाओ और फिर से चलाओ, चल जाएगा। Okay, sir. एंटर। Sir, बाद में भी तो है, but that's not visible to me. I don't know what is happening. दैट विल बी रिजॉल्व्ड। आप एंटर करो। हाँ, Sir, वो वाला नहीं edit हो पा रहा है, बाद होगा में ना। जो है। अरे हाँ, होगा। आप क्रिएट से लेके जो ट्रू तक का ही कॉपी करो ना, सिर्फ ग्रेटर देन Okay, तक कॉपी करते हो। अरे डेटा साइंटिस्ट हो तो थोड़ा लॉजिकली करो ना। हाँ, कॉपी पेस्ट। हाँ, अभी सेमीकोलन लगा दो। हाँ, अब अभी भी फटा क्या? अब रुक जाओ। पासिंग एक्सेप्शन लाइन 187। ये देखो, अभी आपने क्या गड़बड़ किया। रो की स्पेलिंग क्या है? रो फॉर्मेट डिलिमिटेड में रो की स्पेलिंग क्या है? Oh, अच्छा अच्छा। Okay, okay. हाँ, बैक एरो करके आओ। एंटर। डन। शो टेबल्स करो, शो टेबल्स। Sir, I don't know if it's typing or not. नहीं, वो थोड़ा मेमोरी इशू है, वो ठीक है। शो शो हटाओ, सिर्फ सिंगल शो करो। नहीं नहीं, अब देखो ना, ऊपर वाला कमांड कंप्लीट नहीं हुआ, तुमने नीचे एक और टाइप कर दिया। एसक्यूएल में सेमीकोलन से कमांड खत्म होते हैं ना। सेमीकोलन, सेमीकोलन। Okay. एंटर। अब दोबारा से लिखो शो टेबल्स। आपने 3 कमांड एक साथ लिख दिए, शो टेबल, शो टेबल, शो टेबल, तो फट गया। अच्छा। आ गई टेबल। अब इसको डिस्क्राइब फॉर्मेटेड करो। नितिका, आई एम गिविंग यू दिस, राइट? डिस्क्राइब फॉर्मेटेड, उसके बाद टेबल का नाम। किस टेबल को डिस्क्राइब करना है वो भी तो बोलोगे ना। डिस्क्राइब फॉर्मेटेड स्पेस एयरलाइंस। Nitika, which one I give the right to with capital this thing, the initials? Sir, it's resolved. Okay, very good. So you can give back the control to me, Nishta. Okay, sir. Okay. So ये small errors रहते हैं which you should try to avoid. अब select star from the table करो निष्ठा। Select star from the table and see the data.
So guys, if you look at the data by doing select star, you will see these many records, but you will also see null at the top. Null at the top means header, header हटा नहीं, वो अभी भी डेटा में है. So that means there is some problem. Okay, there is some problem. What is that problem? The problem is skip header is equal to true. It does not work in Hive. It works in some other databases, but it does not work in Hive. Instead, there is something else. We have to do skip header line count equal to 1. Means हमें ये बताना है, एक तरीका होता है skip header is equal to true, कुछ डेटाबेसेस में वो काम करता है, बट हाइव में वो नहीं करता. वो कहता है कि skip header line count मतलब शुरू की कितनी रोज उड़ानी है. तो पहली रो में हेडर है तो उसको उड़ा दो. यस नितिका, skip first row. तो नाउ व्हाट वी विल डू, हम टेबल दोबारा तो बनाएंगे नहीं, टेबल तो बन चुका है. वी विल ऑल्टर इट, alter or modify the table and set the table property to this. So we are setting one new property in that. So I am sharing it to all of you. Please run this. That's it. Just run this. So whenever you have a table and you want to change its properties, you alter it. And after that, if you do select star from the table, you will not get that null wala entry C. Earlier 86 rows were there. Now you will get 85. Now you will get 85 rows. Header is removed. Guys, please do it and let me know. वेरी गुड राहुल. तो अभी हमारा डेटा सही से लोड हो चुका है, हमारा स्कीमा हमें पता है, हमारा सेपरेटर हमें पता है, और हेडर हमें स्किप करना है वो हमें पता है. ओके, अब कल को आपको जितनी भी नई फाइल्स आती जाएंगी, आप HDFS पुट करके इस टेबल के अंदर डालते जाओ, आपका डेटा बढ़ता चला जाएगा. आज 85 रोज हैं, कल को इसमें 8 मिलियन रोज भी हो सकती हैं. अगर आप रोज इसमें मान लो हजार फाइल्स डाल रहे हो पुट कमांड से. ओके, तो आपका डेटा ग्रो होता रहेगा. तो फाइनली गाइज वी हैव आवर एयरलाइंस डेटा, ईयर, क्वार्टर, revenue per seat and total number of seats booked in that quarter, 3 months interval. Okay, so now guys, please open the problem statement. Please open the problem statement and read it, and let's solve it one by one. I am reading it out. The problem statement, सबके पास खुली हुई है वो problem statement की फाइल, और you want me to share? Okay, I am making myself presenter. Yeah, so here on the another laptop, if you look at, let me open this document. मैंने आप लोगों को ये लिंक शेयर किया हुआ है ना गाइस, आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड्स पता होंगे LMS के. तो नितिका, if you look at this document, airlines price analytics, so this is the problem statement. These are the two problems which we have to solve, and for that we have to write the SQL queries. Okay, we have to identify how many people will be accommodated in the flights
Okay. What was the highest number of people with the lowest amount of revenue? Identify the highest revenue generation month and the quarter. Data given to us is year, quarter, average revenue per seat, average amount of the revenue generated, total number of booked seats. That's it, nothing else. So only using these 4 columns, we have to solve these 2 problems. Clear? So we have to use Hive to solve this big data problem. So everyone is clear about the problem statements before I start writing the queries? I will start with this one because this is straightforward. Then I will go on to this. Identify the highest revenue generation month and quarter. तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है. क्लियर क्यों नहीं है? What he wants me to do, he is asking me highest revenue generation month separately and month plus quarter combination separately, or he is asking me the combination of month and quarter. आप समझ रहे हो ना? ये क्वार्टर लेवल पे मुझसे पूछ रहा है या मंथ लेवल पे पूछ रहा है? तो मैं इसके लिए 2 एसक्यूएल क्वेरीज लिखूंगा. कई बार इंटरव्यूज में जब आपको प्रॉब्लम दी जाए, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको ब्लाइंडली उसको सॉल्व करना है. यू शुड आस्क द इंटरव्यूअर दैट आई एम नॉट गेटिंग दिस प्रॉब्लम, कैन यू एक्सप्लेन मी? तो हियर वी हैव टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन मंथ फर्स्ट. पहले हम मंथ निकालेंगे, तो हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं. हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन मंथ और सेकंड होगा हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन month and quarter, the combination, like in this month and this quarter we got the highest revenue. Got it? Any question? So let's see highest revenue generation month कौन सा था and highest revenue generation quarter कौन सा था. Yes, Nishtha, I am pinging all of you the problem statement so that you remember while I am writing the queries. टेबल तो मिल गई थी निष्ठा, आपने स्पेलिंग गलत किया होगा. शो टेबल्स करके जब एयरलाइंस दिख रही है तो सिलेक्ट स्टार में क्यों नहीं दिखेगी? स्पेलिंग देखो आपकी, शो टेबल्स में जो दिख रही है सिलेक्ट स्टार में भी वही दी है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ना दिखे. फॉर्मेटेड की स्पेलिंग गलत है. कमांड पिंग करना जरा, आपने क्या कमांड लिखी है? डिस्क्राइब फॉर्मेटेड में वो फॉर्मेटेड नाम की टेबल ढूंढ रहा होगा क्योंकि आपने फॉर्मेटेड की स्पेलिंग गलत लिखी है. अब एयरलाइन डेटा क्यों ढूंढ रहे हो आप? टेबल का नाम एयरलाइन डेटा है. शो टेबल्स करके देखो, एयरलाइंस रखा है आपने टेबल का नाम. एयरलाइन डेटा कहां से आ जाएगी? शो टेबल्स करो और बताओ मुझे वहां पर कौन सी टेबल आ रही है. Meanwhile, Gomini, Aditi and others, please try to write the SQL for the second problem statement and share it to me if you can do that. Nishtha, what's the table that you are getting on show tables? Airlines or airline data? Very good. So that you got the error, right? You should use airlines, not airline data. Perfect. Okay, guys. So I'm solving the second problem first. Identify the highest revenue generation month. This is the year. This is the quarter, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. This is the revenue per seat and this is the total seats, right?
You have revenue per seat and we have total seats. So first of all, we need total revenue. Can anyone tell me how will I get total revenue? This is the total number of seats. This is the average price per seat. How will I get total revenue for each entry? Multiply. Very good. So what I will do, I will say select star, comma, this multiplied by this as total revenue for that particular combination, okay, of month and year or quarter or year, whatever. So I get this as my output. Select star, comma, this multiplied by this as total revenue. So this is the total revenue. E7 matlab e to the power 7. Okay. E7 means e to the power 7. That is a scientific notation of writing a number, a very big number. So much, guys, is clear to all of you. So now let's go back to the first question. The first question is highest revenue generation month. तो पहली बात तो पहला तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें ईयर और क्वार्टर पता है, हमें मंथ तो पता ही नहीं है, तो हम मंथ लेवल पे तो इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते. इसीलिए उन लोगों ने क्वेश्चन में लिखा था हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन मंथ एंड क्वार्टर. तो अल्टीमेटली गाइस हम इसको क्वार्टर लेवल पे ही सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ, तो वो क्वेश्चन गलत है. क्वेश्चन होना चाहिए ईयर एंड क्वार्टर, नॉट मंथ एंड क्वार्टर. सब all of you agree with me? The second question is wrong. It should be identify the highest revenue generation year and quarter. So for example, this year and this quarter, or this year and this quarter. You cannot identify it at the month level. So this is a wrong problem. Guys, you are with me so far or anyone disagree? Perfect. Thanks, Tanya. Okay, Gomini. Perfect. So we will change the second question. It is identify the highest revenue generation year and quarter. So which combination of year and quarter gives me highest revenue? I already have the revenue. Now out of all these rows, guys, it's very, very easy. Out of all these rows, which row contain the maximum value of revenue? That's it. I already have the total revenue for each year and quarter combination. Now I will simply run a query which is like select max of total revenue. Okay. So it's very, very easy. I already have this query. Copy it. But guys, what I need to do now is I need to create a temporary table because this output needs to be stored in another table. Okay. So I will use this query and create another table which will contain this column also. So what I am going to do, I am going to say create table, इसका नाम देते हैं airlines underscore revenue as, देखो, you can create a table from a select query without specifying the schema because schema will come from this query. So let's run it. So now it's running a map reduce. See, so now it started a map reduce. So guys, I am pinging you this query.
please do that. तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कोई क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने दिया है तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो. Apply your brain, see if the problem statement is wrong. Sometimes they definitely give it intentionally. आप लगे हुए हो मंथ के लेवल पे सॉल्व करने में और मंथ है ही नहीं उसमें. Nitika, yes, very good point, Nitika. Definitely, that's a great point. We should create a view. You are right, but I'm creating a table. You can create a view, Nitika. That's fine. So instead of create table, you say create view as. Let's start from that. So you are right, Nitika. Vipul, can't we use this revenue column alias without saving it in the table? Absolutely, Vipul. That will make my query actually complex. So I don't want to do it. But definitely, I can do it without creating a temporary table or a view. But there will be too many subqueries, Vipul. It will become complicated, so I don't want to do that for each of you. Okay. We can do it without creating the table also. Yes, Guldar. Okay, guys. So I have this table created, I think. Let me check. Okay, no. Map reduce will take some time, but that's fine. So that's how you actually work on a project or a use case end to end. You may need to create some tables which you can drop once your analysis is done. Okay, Vipul? I have done a create table command, Vipul. Ideally, I should have used either a create view or there is a syntax you can use, Vipul. Create temporary table. Okay, Vipul? Let me do that also, guys. Ideally, we should avoid creating permanent tables. I'm pasting it here. So Vipul, ideally, all the intermediate tables can be temporary tables. Spelling मुझे temporary नहीं tempo अच्छा हाँ temporary हाँ. तो create temporary table and table name this. अब ये टेबल तो क्योंकि ऑलरेडी बन गया है तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, रेव कर देता हूँ, रेवेन्यू. तो टेम्पररी टेबल जब आपका ये हाइट का सेशन किल होगा ना, जैसे आप हाइट के सेशन से बाहर आओगे वो टेम्पररी टेबल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे. आपको खुद से ड्रॉप नहीं करने पड़ते. ओके, आपको खुद से ड्रॉप नहीं करने पड़ते टेम्पररी टेबल्स. इसलिए प्रेफर क्रिएटिंग टेम्पररी टेबल गाइस. क्रिएट टेम्पररी टेबल लाइक दिस, ऑल द इंटरमीडिएट टेबल्स. परमानेंट टेबल अगर आप बनाओगे इस तरह से, ये आपको खुद से ड्रॉप करना पड़ता है. ठीक है. कैन वी क्रिएट CTs? Yeah, Tanya, you can do that also. Hive support CTs also, common table expressions. Definitely you can do that, but I don't want to go into that. But that's a very good point, Tanya. CTs actually are the best approach to solve such complex queries or reusable queries. But I don't want to start something new here. Okay. So if you know CTs, that's good. Okay. So guys, you know how to create now intermediate tables, whether they can be permanent or temporary, and temporary will automatically be dropped. Okay. For example, if I copy and I'll say describe formatted this table, describe formatted अच्छा, यहाँ तो मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट है. वैसे इसका पाथ देख के आपको पता लग जाता है. ये देख रहे हो, टेम्पररी टेबल जो होती हैं वो टेम्प फोल्डर में बनती हैं. बिल्कुल, टेम्पररी टेबल they are created inside the temp folder, and temp folders they automatically get flushed once you are out of the session.
Okay, but if you look at describe formatted, जो हमने परमानेंट टेबल बनाई थी, जो हमने ये वाली अभी इंटरमीडिएट टेबल बनाई है, so if you look Vipul, this is created inside a proper Hive warehouse. So this is a permanent table. So this won't be deleted once your session is over, but the one, this is created inside the temp folder. Okay, so definitely guys, these are good points that you are noting, Tanya, Vipul. These are important things. Okay. Okay, so we have created the intermediate table which contains the revenue for total revenue which is coming by multiplying these two values. Now what I need to do, अच्छा ये देखो ये स्कीमा भी अपने आप बन गया गाइस, टोटल रेवेन्यू कॉलम अपने आप ऐड हो गया फ्लोट टाइप पर. ओके, तो अब मुझे बस ये देखना है मैक्सिमम रेवेन्यू किसके लिए है. तो इसका क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एयरलाइंस revenue where देखो मुझे करना क्या है, मुझे अब ये देखना है कि इन सारे रिकॉर्ड्स में से मैक्सिमम ये वाली वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए है. ओके, तो मुझे मैक्स वैल्यू निकालनी है इस कॉलम की, रेवेन्यू कॉलम की. तो क्योंकि मेरी क्वेरी अब आगे कॉम्प्लेक्स होने वाली है इसलिए मैंने ये टेबल बनाया था. अब देखो ये सबको समझ आ रहा है ये क्या लिखा है मैंने. बिफोर आई एक्सप्लेन इट गाइस, read it and tell me if you are able to understand this. Okay Tanya, good. Guys, there is no problem in saying no if you don't get it. So I am selecting first of all the maximum revenue value from the table, and then I am looking for those rows or records where the total revenue is equal to the maximum revenue. Guys, anyone who didn't get it, let me know. Okay, so I understand that everyone get it. Selecting the maximum value of total revenue and then equating it, comparing it to each and every row, that which row contain that maximum value. तो मतलब आपने पहले सब लोगों में से मैक्सिमम रेवेन्यू की वैल्यू निकाली और फिर उन लोगों को ढूंढ रहे हो जो उस मैक्सिमम वैल्यू के इक्विवेलेंट है. गुलजार, तो अब इसमें कुछ गड़बड़ हुआ. कैन नॉट रिकॉग्नाइज द इनपुट नियर सिलेक्ट मैक्स, कुछ गड़बड़ हुआ होगा. Select the row which contains the max value, alternatively order by revenue, describe हाँ मतलब तरीके बहुत है इसको करने के विपुल. ये क्यों फट गया लेकिन. ओ अच्छा, एक तो ये हो सकता है कि मैंने उसको एलियास नहीं दिया, बट वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा चलो करते हैं कि करके इसको रिजॉल्व. दूसरी चीज ये होती है कि हाइव में सब क्वेरी डज नॉट अलाउ इक्वल टू, मतलब इस पे तो मैं आने ही वाला हूं, बट आई डोंट नो कि वो क्या एरर आ गई. हाइव में जब हम सब क्वेरी यूज करते हैं तो इक्वल टू अलाउ नहीं है, जबकि बाकी डेटाबेसेस में इक्वल टू अलाउ होता है. तो यहाँ पर हमें इक्वल टू की जगह इन लिखना पड़ता है. पहले देखते हैं कि उससे ये रिजॉल्व हो जाता है, तो नहीं तो फिर हम इसको आगे और देखेंगे. तो हाइव में वी कैन नॉट यूज इक्वल टू फॉर सब क्वेरीज,
Okay, now what? अभी वो वाला एरर रिजॉल्व हो गया. ओके, मतलब वो इक्वल टू की वजह से ही था. तो इन शुड बी देयर. Now semantic exception, unsupported subquery expression, total revenue, correlating expression cannot contain unqualified column references. So the column reference that I am giving, this one, it's saying it's unqualified. So let me put an alias to it. Okay. So let's resolve one by one. Copy, paste. So put an alias to it as say max revenue. Okay. Okay. Okay, it's done. Okay, so let me explain you what is the error and how to resolve it. Before that, let me ping you the query. मतलब देखो मुझे भी ऐसा ही रटे हुए हैं. I just look at the error and resolve it. Okay, that's what is more important. तो देखो हम एरर पढ़ते हैं. पहली बार जो एरर आई वो मुझे पता था कि इक्वल टू अलाउड नहीं है, हाइव में इन अलाउड है, तो मैंने वो रिजॉल्व कर दिया. बट अब उसके बाद जो आई वो बड़ी अच्छी एरर है. वो क्या है कि भाई जो सब क्वेरी एक्सप्रेशन है आपकी, ये जो सब क्वेरी है, इट इज सेइंग कोरिलेटिंग एक्सप्रेशंस. आई एम कोरिलेटिंग दिस एक्सप्रेशन विद दिस एक्सप्रेशन. सो इट्स अ कोरिलेटिंग क्वेरी. मींस सेम टेबल को ही यहाँ पे भी रेफर किया गया, सेम कॉलम को भी रेफर किया गया, तो कोरिलेशन है यहाँ पे. नाउ दे कैन नॉट कंटेन अनक्वालिफाइड कॉलम नेम्स. मतलब this is a column name, but it is coming from which table? If you put the table name, it will become qualified, otherwise it is unqualified. Remember HBase? In HBase I told you something known as column qualifier. So it's something like that. Means whenever you are writing a subquery expression, guys, and on both sides you have the same table, then column name should be referred with the table name. Table name dot column name, table name dot column name. So that's what I did. So instead of directly using just the column name, I am saying table name dot column name. Here also like table name dot column name. So it's saying correlating the expressions cannot contain unqualified column names. Your column name should be qualified with its table name. Column name के साथ table name देना mandatory होता है अगर आप सब queries use कर रहे हो. Guys, is it making sense? So look at the errors and learn from the errors. क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम ये नहीं पूछते कि क्या आपको एसक्यूएल लिखना आता है. सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने आज तक क्या क्या एरर फेस किए. बिकॉज एरर्स वही फेस कर सकता है या उसी को याद रहेंगे जिसने असली में काम किया है, वरना तो आप बुक खोल के भी पढ़ सकते हो. ओके, तो इन इंटरव्यू वी मोस्टली आस्क टेल मी एटलीस्ट 5 एरर्स that you faced while working on Hive, and only the person who worked and remember can help
answer those questions. Okay. क्योंकि एसक्यूएल तो मोस्टली लोग लिख ही लेंगे. Yes, yes, Gulzar. और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि ये एक क्वेरी अपने आप में 3 MapReduce जॉब्स चला रही है गाइस. One MapReduce will run for this to find the maximum revenue. Second MapReduce will run to identify this data. Third MapReduce will run to compare the data between this side and the subquery. So if you look at total MapReduce jobs are 3. It's running first. This is the first job. Then it must have run the second job. And now it's running the third MapReduce job, which is this job. So it's running multiple MapReduce jobs for you. So remember that one SQL query can trigger multiple MapReduce jobs if it is complex query. Guys, let me know जब आप लोगों का भी ये job complete हो जाए. This is the row. This is the output. Year 2014, fourth quarter. That means October, November, December. Normally that's the holiday season, right? We have Diwali, we have Christmas, we have Thanksgiving, right? So during the fourth quarter, and that to year 2014, we got the maximum revenue. Because during that time, oh, this is airlines, right? So this is not a retail. So airline means people travel, right? People are going to Goa, people are going to different places, going to meet their relatives for Diwali and all, for Thanksgiving or for year end. So that's why December this period is good for the airline companies. So this is the output of our initial analysis. Yes, Gulzar, correct. But still, if you look at 2020 and this month, people have been traveling more and purchasing more as compared to the rest part of this year. Guys, did everyone got this output? Yeah, perfect, Karan. Just look at the logs, okay? Read the logs properly.
Guys, other people, are you able to run this job? Still running? What's the status? So Rahul, same output you are getting? So data was up till 2016, first quarter, and this was the highest if you look at. If you look at the entire data, definitely this is the highest. What about you, Aditi, Gomini, Nishtha, Nitika? Vipul, Tanya? Okay, very good. So guys, let's move on to the second point. Okay, very good, very good. So now let's read about the first problem statement. The first problem statement says to identify how many people will be accommodated in the flights. Okay. तो पहले वाले प्रॉब्लम के दो पार्ट्स हैं. Identifying how many people will be accommodated in the flights means for each what do you say, for each year and quarter, how many people actually traveled for each year. मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा वेग है. To identify how many people will be accommodated in the flights, but on basis of what? तो मैं पहली दो लाइंस को अगर इग्नोर करूं तो अगली जो पार्ट है वो क्लियर है. It's saying what was the highest number of people with the lowest amount of revenue. नहीं विपुल, आप समझ रहे हो? पहला पार्ट तो क्लियर ही नहीं है. To identify how many people will be accommodated in the flights. मतलब if you can help me elaborate. Second part तो I will help you. One second. To identify how many people will be accommodated in the flights. नहीं, number of people तो equal to number of seats, नितिका, you are right. But वो तो हमें already given है ना. If you look at, तो ये तो हमें already पता है कि कितने लोगों ने travel किया है. We already know the number of people who traveled with us in that particular quarter. Where more number of passengers contributing to least revenue.
वो सेकंड पार्ट है गुलजार। मैं इस जो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें भी दो पार्ट्स दिख रहे हैं। टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी पीपल विल बी अकोमोडेटेड इन द फ्लाइट्स। सर हाँ बोलो। तो जो क्वेरी अभी आपने चैट्स में डाली है तो उसी क्वेरी का ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट है कि? गुलजार अभी हम पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने अभी तक इसके बारे में कोई क्वेरी नहीं भेजी है। सर राइट, अभी हम सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे थे अभी तक, जो मैंने अभी आपको जितनी भी क्वेरीज भेजी हैं दे वर अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट which is to identify how many people will be accommodated in the flights. Okay, उस पार्ट को मैं बाद में बताता हूँ, उसी का ही दूसरा पार्ट पहले हम बात करते हैं। What was the highest number of people with the lowest amount of revenue? So guys, let me solve the second part first. First problem statement, second part, which is this. What was the highest number of people with the lowest amount of revenue? Means out of this data, where we see that we have highest number of people traveled, but total revenue was lower. For example, if you look here, not this, yeah. So this is my total revenue, and this was the number of people who traveled. So this is higher revenue. If I compare to this, this is higher revenue, but here I have higher people also. But what I need is, अगर ये lower होता, means if this is higher, like more people traveled, but revenue was less. How can I get that value? I can get that value from average, what you say, average price per seat. Guys, you are getting it. If maximum people traveled, but I get minimum revenue, means average price per seat should be least. Sir, Yes, tell me. sir, but in this case, if number of people मतलब are like कोई equal records होंगे तभी तो हम compare करेंगे। कोई जो equal record है, अगर उसका मैक्सिमम एक ही वैल्यू है, मतलब एक ही रॉ है, तो फिर उसमें हम क्या चेक करेंगे? इफ हाईएस्ट रिकॉर्ड के मल्टीपल वो होंगे रिकॉर्ड्स, तभी तो वी कैन चेक द लीस्ट रेवेन्यू। नहीं, आपको जितना भी आउटपुट निकालना है ना, that is based on this month and the quarter. In which month and the quarter there was maximum people who traveled, but my revenue was less. You getting it? मतलब ऐसा कौन सा साल रहा जहां पर लोग तो सबसे ज्यादा ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन मेरा जो कंपनी का बेनिफिट है, प्रॉफिट है, वो फिर भी लेस था। तो सर ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज भी? On the combination of both year and quarter, because otherwise तो we cannot do the analysis, right? We have to identify a primary key sort of something. किसी प्राइमरी की पे ही तो हम एनालिसिस करते हैं ना। तो सर जो हमारा मिनिमम ऑफ टोटल रेवेन्यू होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ सीट्स होंगे वही तो हाईएस्ट पीपल होंगे। हाँ एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
So highest number of people. अब मैं इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा और सही से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कर क्या सकते हैं हम, बिकॉज दिस फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नॉट दैट क्लियर. हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल. देखो यहाँ पर हम करते क्या है नॉर्मली, आपको पहली बात तो ये पता लगाना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल कब ट्रेवल करे थे हमारे सिस्टम में. ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल आर ट्रेवलिंग हेयर एंड हेयर फॉर एग्जांपल, बट out of these two I have to look at the average price per seat. Average price per seat is, for example, lesser here. Average price here we have more people traveled with us. ठीक है, ज्यादा लोग ट्रेवल किए हैं, but revenue is less. Okay, revenue is less. So here if you look at total revenue, here is less as compared to here, जबकि यहाँ पे कम लोगों ने ट्रेवल किया था. ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स है. इट्स सेइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कब ट्रेवल कर रहे हैं, तो वी कैन सी एट से टॉप 5. मैं टॉप 5 रिकॉर्ड्स निकाल लेता हूँ मान लो पूरे डेटा में, जहां पर मैक्सिमम पीपल ट्रेवल्ड, एंड उन 5 में आई कैन फर्दर सॉर्ट इट. तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है ना, ये सॉर्टिंग से भी हो जाएगा. फर्स्ट यू नीड टू सॉर्ट इट बाय द people, number of people in the ascending order, in the descending order, so that you get the highest person at the top, and then you further sort it based on the price in the reverse order. You are getting it? Let me do it. It can be done with sorting only. You will first sort on this, and then you will reverse sort on this. मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. They are asking for the highest number of people. तो highest number of people, I can sort this data and get कि highest सबसे ज्यादा people कब travel किए थे, and then जो भी उसका output आएगा उसको I can further sort it based on this particular values, and this should be lowest. So wherever I'll get this as the maximum and this at the lowest, that's what the answer is. Any doubt, concern, query, disagreement, you're more than welcome, क्योंकि मैं खुद ही ट्राई कर रहा हूँ समझने की. Guys, anyone who is having a different thought, it's more than welcome. Yeah, Vipul, you are right, but then I am thinking, what if only 1% traveled? For example, Vipul, for example, in this year, what if only 1% traveled and he gave maximum revenue? तो ये वाली वैल्यू फॉल्स प्रिडिक्शन देगी ना, क्योंकि उस केस में आदमी एक ट्रेवल किया था, चाहे उसने 500 रुपए दिए हो सीट के. समझ रहे हो? तो मुझे इस वाले कॉलम को भी कंसीडर करना पड़ेगा विपुल. अग्री डिसअग्री विपुल? इट में सो हैपन राइट कि एक पर्टिकुलर ईयर क्वार्टर में सिर्फ 100 ही लोगों ने ट्रेवल किया, लेकिन वो 100 लोग सबसे महंगी टिकट ले गए. तो मैं सिर्फ एवरेज प्राइस के बेसिस पे नहीं कर सकता, वरना पहले मैं भी यही सोच रहा था जो आप कह रहे हो. Agree, guys? Anyone? Vipul, your point is very good. Thanks for that. Anyone else? SQL is like this only, guys. Huh? नहीं, टोटल रेवेन्यू पे भी नहीं कर सकते गुलजार, बिकॉज टोटल रेवेन्यू में total revenue में there is a glitch. I'll tell you, minor glitch.
देखो वहां पर क्या गड़बड़ है गुलजार, अगर आप ये वाला रिकॉर्ड देखो, मैक्सिमम पीपल ट्रेवल्ड हियर, ओके, मैक्सिमम पीपल, ओके, 1 सेकेंड। और ये तो क्योंकि छोटा सा डेटा है तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, नहीं तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। लेट्स कंपेयर दिस रिकॉर्ड एंड दिस रिकॉर्ड। यहां पर आपके lesser people traveled, but they paid more price per this thing, whatever, per seat. So you got to total of 1.57 as the price. Here, if you see, more people traveled, and you have lesser amount of average price per seat. So actually, this is the answer of this question. If I compare these two records, this should be the answer. So now you tell me, what should I do? Should I look for highest revenue? Then I will get this, which is wrong. Should I look for the lowest revenue? Then this is not the answer. Actually, then this is the answer. Lower revenue. This is the lower revenue. So ना तो मैं हायर रेवेन्यू से आंसर सही निकाल सकता हूँ, ना मैं लोअर रेवेन्यू से आंसर सही निकाल सकता हूँ। तो अल्टीमेटली यही दो कॉलम है जो मुझे हेल्प करेंगे। ना तो ये कॉलम अकेला हेल्प करेगा, ना ये कॉलम अकेला हेल्प करेगा, ना ये कॉलम अकेला हेल्प करेगा। These two together can help me. I'll tell you. Guys, anyone else, any concern? Are you getting it what I'm trying to explain? Individually, I don't think any column can solve this problem. We have to use combination of columns. And because this is a derived column, we can ignore this. These two are enough. These two are enough. Okay. So let's try to do it. Vipul, I think this is the right approach which you are just pinged. Huh? I think that's the better approach. Yes. That's a good approach, Vipul. So I'll do your approach later, Vipul. Let first me do only via sorting and see how the output looks like. Okay, so first problem statement, second part is tell me in which year and quarter I got maximum people those traveled, but I got minimum revenue.
So we will say select star from airlines revenue. I'll say order by total number of book seats in the descending order and average price per seat in the ascending order. That's it. So this is the query. That should give me some result. Let's compare it. Let it come. So guys, try this, and then after that we will try Vipul's approach, which is I think the right approach here. Perfect. So guys, देखो, अगर आप मेरी क्वेरी का आउटपुट देखोगे, आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट और रॉन्ग, but I'm saying consider if this approach is right, how can we justify it? Because sometimes in interview they ask you, okay, you have written this query, justify it. Okay, so okay, yeah, so the problem statement was like, tell me which year or which year quarter combination maximum people traveled, but I got minimum or least revenue in total, and that's because of the average price per seat only. So I have sorted it by कि भैया maximum people कब आए, तो maximum people traveled in January first quarter of 2010. Okay, first quarter of 2010 maximum people were there, and if I further sort it based on the average price that I have, I can see that definitely it's lesser, like 328. So दो बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रेवल किया इस साल, बट पैसा जो हमें मिल रहा है एवरेज प्राइस पर सीट इज लेसर. सो इफ यू कंपेयर दिस सेकेंड एंट्री, here you have lesser people who traveled, but you got more revenue, right? If you even look at this record, more people traveled, but you have lesser revenue. So if you keep looking at it, this really justify the problem statement, but only to certain extent. कि भाई, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ही वेग है, ये क्वेश्चन बहुत ही वेग है, इसका कोई वन राइट आंसर नहीं है. ओके, सो दिस इज the first answer. Then we will try Vipul's answer also. So you get that maximum people traveled, but with lesser revenue. Okay, but again I am saying this is not the right answer. Now let's try Vipul's approach. So what Vipul says is, and Vipul, you can correct me if I am going wrong. So what Vipul says is, where is the data?
We can identify the maximum the maximum people traveled, subtract that value with each of these and derive a new column. For this, get the minimum value. For this, get the maximum value, subtract with each. For this, get the minimum value, subtract with each. And then do the sorting. Is that right, Vipul, or you have something else to add? Right. So I'm just trying that approach, guys. Min max scaling. No, Gulzar. Sir, Not scaling. It's not min max scaling or any other standard scaling. Because even if I do scaling, scaling means you are just putting these values on a scale. I got it, what you are saying, but then you also divide, right? In scaling, you also divide the value. So I'm not dividing. Yes, Nitika, again, sorting should be based on the both columns. One ascending, another descending. Okay. Let's try it out. It's interesting. So I have to get the maximum value for this and minimum value for this. This will make it a bit more complicated. I can do it with the airlines or airline revenues, both tables, anyone I can select. Get the minimum value for this. Get the maximum value for this. Okay. I am creating another table. Create temporary table. This time airlines, sorry, min max as this. बिकॉज मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया तो मुझे ग्रुप बाय भी देना पड़ेगा बिकॉज आई गिवन स्टार हियर. अनग्रुपिंग मुझे यहाँ करनी नहीं है. So I just need to get the min value and the max value, that's it. Of the entire data, I'll get the min value and the max value.
Nitika, we can do that. That's also possible. Like you do PLSQL programming. That can be done, but inside Hive shell, we cannot do that. We have to write a Hive script for that. Okay. Okay. So given the data that we have, we cannot solve it using this or that or not even that. No. Get max and min, etc. Okay. So we are done with this. We got the data. Now we simply need to subtract the data. So we will say, okay, select star from airlines, comma, so I need to subtract the average price with the minimum price, which is copy, paste this dot mn and subtract this with this dot mx. Okay. From this, I have to do the join with this. Okay. So what I need to do here is, guys, what I'm doing is, I have this table, which is the original table, which contains 4 columns. I have this another table, which contains only 2 values, nothing else, only 2 values. Okay. So I have to subtract this particular column with this particular column, this particular column with this particular column. Okay. That's what I'm doing. But I cannot directly subtract the data from the 2 columns. I first need to join them. Okay. Concatenate them somehow. So that's what I'm doing. I'm joining these, but there is no join key. I don't have any join key between these 2 columns. Let's see how that will behave. Okay. I don't have any join key, so it will be a Cartesian join. I'm sending you this query. Guys, if you have any doubts, do definitely let me know. So what I'm doing is, I have first table, I'm subtracting its values to the second table, but I cannot subtract columns from one table to another unless I join them. So I joined them. But to join 2 tables, you need a join key. But since this table only contains one row, only one row, I don't give a join key. That's also fine. It's like a Cartesian join, but I'm fine with it because it will not increase my data. Okay, getting it? Those who know SQL, Tanya, Vipul, Aditi, Gomini, or Karan. I am joining. Why I am joining? That's first thing. Second, I'm not giving any join key because this is a single row table, so it will not impact the Cartesian product or cross product. So I can simply ignore the join key and I can subtract the data. So let's see the output. Okay. Sorry.
So I got the output. This is my data. I have certain negative values. 1 second. That's fine. If all are negative, I can take their mod. But that's perfect. Okay. So now what I got is this value. For example, this value. How far is this value from the maximum value? How far is this value from the maximum value? So the value which is nearest to the maximum value should be the one I should select. The one which is nearest to the maximum value out of all. And in this case, the one which is nearest to the lower value, that's what I should select. Okay. Because this value is negative, let me remove the negation part of it. So there is a cross product. Okay. Just give me 2 more minutes and then we will disconnect this class. What's the time right now? We will disconnect this class at 2:30, just 8 more minutes. This is the last question that we are doing. That's the thing, guys. Project actually takes time. Like we cannot complete projects within the stimulated time. So now I will simply sort it by the smaller values of these two. Like wherever I have the smaller values of these two differences, that should be the answer. Okay, so let me simply sort it out now. I am saying difference 1 and difference 2, just the name. So as diff 1, ascending, comma, difference 2, ascending,
Let's see what it gives the output. It may give the output same as the earlier one, but let's see what happens. इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली रिपोर्टिंग से सॉल्व किए जा सकते हैं इन अ बेटर वे, because when you have charts, bar charts and reports, you can simply see, okay, where you have the maximum value for a particular column and minimum value for a particular column, and you can easily relate it. Doing SQL, it becomes a bit tricky. So you have ordered both the columns by ascending order? Because I need to identify the minimum difference between the two, right? Have you removed the negative sign, the minus sign? Yes, I have removed it. So how did you remove it? मैंने बस वो साइन इधर का उधर कर दिया ना, मतलब a माइनस बी को b माइनस a कर दिया, a माइनस Okay. बी को b माइनस a कर दिया, तो वो हट गया बस. बिकॉज पहले मैं मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमम से सब्ट्रैक्ट कर रहा था, मैंने मैक्सिमम को मिनिमम से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो नेगेशन अपने आप हट गया. So earlier I was getting 2010 Q1. This is interesting. Let's see. Okay. So this is what is coming as the answer. Now let's elaborate it. So this is the maximum. Wait, there is something. Even sorting is not the right approach to do it, guys, because I sorted it based on this difference to be minimum and this difference to be minimum. Okay, but see the problem that happened is वो पहले इसके बेसिस पे सॉर्ट करता है सब कुछ, पहले इस कॉलम. इसको अभी मैं सही करूंगा, 1 सेकेंड, आई विल टेल यू. उसने पहले वैल्यू और उसके बाद जहां सॉर्टिंग हुई नहीं, क्योंकि इस कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट हो गया और उसके बाद इस कॉलम को सॉर्टिंग के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाता है. ये कॉलम सॉर्टिंग के लिए तभी कंसिडर होता है जब यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज मिलती हैं. ओके, अदरवाइज दैट इज नॉट यूज्ड फॉर सॉर्टिंग.
So what I can do is either I can add these two values. That's one of the thing. I can add these two values, and जो भी मेरे पास आउटपुट आएगा उसके बेसिस पे फिर मैं सॉर्टिंग करूं. The difference, see, the question asks you to identify the maximum maximum number of passengers who traveled in a particular quarter, but still you have minimum revenue, and that can be based on the average price per seat. So I identified the maximum customers when they traveled and the minimum average price throughout the company, आज तक जितने भी quarters हैं throughout. So when I subtract these values and these values, and wherever I will get zeros, that means that's the right answer for me, because in that case I am nearer to the maximum value and nearer to the minimum value. So what I can do is even I can add these two values and then sort, but then the problem is the scale. This is having a different scale and this is having a different scale. So I cannot simply add them and sort them. So what I can do is I can bring these values also on the same scale. We are unnecessarily going into very complex, but let's see. We can scale these values, like we can do min-max scaling here also. We can do min-max scaling here also, add those two values and then give you the answer. So I leave it for the day. It's unnecessarily becoming complex. I don't think that's the right approach. What we are following, it must be something simple, or the question is not framed properly. Okay. So Vipul and others who understand it, they please try it out. But I think we are unnecessarily making it complex. Okay. So we will discuss about this tomorrow. Let me look into it. Is it really this complex? I don't think so. Okay. So thanks guys. Thanks for your time. Think about this in your free time and we'll discuss tomorrow. Sir, Yes, go ahead. sir, Yeah. the statement is saying what was the highest number of people with the lowest amount of revenue. So whatsoever with the lowest amount of revenue, the people corresponding to that revenue would be the maximum one if there is one record. ये आप मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहे हैं? नहीं सर, मतलब मुझे यही सॉल्यूशन लगा था इनिशियली कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो लोएस्ट रेवेन्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल बताने हैं, तो अगर वन रिकॉर्ड है तो जितने भी नंबर ऑफ पीपल होंगे दैट वुड बी द मैक्सिमम फॉर दैट रेवेन्यू. Okay. हाँ. You are right actually. If we look at the problem, that question, what is the highest number of people with the lowest amount of revenue? तो वो तो बहुत ही सिंपल है कि you just identify the lowest revenue and tell the maximum like the value of the people for that. So in that case, if you look at you have to first multiply these two values, get that lowest revenue, sort it and get the people. I think we made it unnecessarily complex. Okay. You are right. We made it unnecessarily complex, but this problem was very straightforward. We have to identify the lowest revenue by multiplying the two values, get that, and what was the total number of people for that. That's what was asked. So you're right, Nitika. We unnecessarily made it very, very complex, which was never the requirement. To identify in which year we had maximum people with minimum revenue, which can only be done through reports and charts.
because that's not an absolute value, that's a relative comparison. Okay, so that so you're right, Nitika. But still that first part is not yet clear. Identify how many people will be accommodated in the flights. I think that was just to clarify the first part only, Nitika. Like how many people will be accommodated actually can be identified with the highest number of people with the lowest amount of revenue. So actually this question was very, very easy. They asked us to identify how many people can be accommodated in the flight, and for that they only told us what we need to do. We have to identify the lowest revenue के साथ highest number of people कितने हैं. So that was actually one problem statement only. So there was a problem in my understanding of the problem statement. It is very, very easy because first part is always easier than the second part. हमने second part easily कर दिया था. So first part is even easier. Guys, I hope you get it. We made it complex by going into another direction. What we tried to identify was in which year or quarter we have maximum people but minimum revenue. But they asked it very simple. That in which whenever we get the lowest revenue, what were the number of people? But still I am not yet convinced. So I will look into the solution for this because that word highest is still wrong. Otherwise उन्हें बोलना चाहिए था what? Wait. Otherwise उन्हें बोलना चाहिए था what was the number of people with the lowest amount of revenue, Nitika. Why they said highest? You're getting it, Nitika. Still I am doubtful. They should say what was the number of people with the lowest amount of revenue. Why they are saying highest? Getting it, Nitika? Yes, sir. इस problem statement में गड़बड़ है. गड़बड़ है. ठीक है, but your point is absolutely correct. अगर वो highest word ना होता इसमें, तो इसलिए Vipul and I went into logically correct direction, but still I am doubtful. I'll let you know. Okay. And that's why SQL is never easy. SQL has too much logic to it. Java is comparatively easy if you look at. Yes, Vipul, let's understand it more and then we can discuss tomorrow. Each one of you, I request to apply your own thought and then we will talk tomorrow. Okay, with that, guys, I'll over the class for the day. Thanks a lot. Excuse me, sir. हाँ गुलजार, yes. Rest people can drop. Yeah, गुलजार, go ahead. सर जो एक रिकॉर्ड की लीस्ट रेवेन्यू का हम किसी एक रिकॉर्ड में से एज्यूम तो नहीं कर सकते या कर सकते हैं कि उसी में हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स होंगे अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी भी हुई है तो? दोबारा बोलो आप. सर कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि तो इसमें जो रिकॉर्ड लीस्ट रेवेन्यू वाला जो रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब हम ऐसे एज्यूम तो नहीं कर सकते ना कि वही हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स होगा? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वहां वो हाईएस्ट वर्ड नहीं होता तो नितिका का पॉइंट सही था कि जब लोएस्ट रेवेन्यू है तो नंबर ऑफ पीपल कितने बता दो. बट वो हाईएस्ट वाला जो वर्ड है उससे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जा रही है. ओके, तो यू आर करेक्ट गुलजार, यू आर करेक्ट. ओके, सो वी नीड टू थिंक सर एक मोर मैंने अबाउट. एग्जांपल डाला है. सर अभी एक एग्जांपल ही डाला है मैंने. Can also be at least 5 values of revenue. Only the max may have the highest number of passengers. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आपके पास 5 रेवेन्यूज हैं उसमें से हाईएस्ट रेवेन्यू पे मैक्सिमम पैसेंजर्स ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है उन दिनों आपके टिकट के प्राइस ज्यादा थे.
यस सर, ये भी हो सकता है कि टिकट की प्राइस सर ठीक है, मतलब जैसे अगर ये डेटा एक तो कंप्लीट नहीं है, इसमें और कॉलम्स होने चाहिए या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा और क्लियर होना चाहिए। तो मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर जैसे 100 या 200 पैसेंजर्स हैं, उनमें से जो लीस्ट 5 रेवेन्यूज, हाँ सर ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। मतलब go through it more. That's the beauty of SQL. It will make you more confused. But yeah, you are right, Gulzar, Nitika, you, Vipul, all of you are right in your own understanding. Okay, and we'll discuss more tomorrow. Okay, tomorrow we have a class at the same time. सर अच्छा, और सर So we will first complete this problem statement and then we will start with Spark. बोलो गुलजार बोलो। सर जो क्लाउडेरा का जो वीएम का लिंक था, मैंने मेल में से दोबारा चेक किया था इसको दोबारा डाउनलोड करने के लिए, पर वो नहीं मिल रहा, तो क्या वो दोबारा भेजा जा सकता है? नहीं, मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, गूगल ड्राइव पे जाओ, गूगल ड्राइव में ऑलरेडी वो शेयर्ड में दिख रहा होगा। अगर एक बार आपके पास शेयर किया गया तो गूगल ड्राइव में मिल जाएगा। सर क्या एक बार उसका लिंक फिर से मिल सकता है? नहीं, मेरे पास नहीं है उसका लिंक। गोमिनी, कैन यू शेयर दैट लिंक ऑन दी ग्रुप if she is there, or you can ping Gomini separately and ask her to share सर that आई link थिंक to you. शी हैज लेफ्ट, आई चेक्ड शी So हैज लेफ्ट। ping her on the WhatsApp. Okay. ओके Okay. Okay, then Gulzar, thanks a lot. Damini, we can close the session.